I welcome each and every participant here, and I invite Nitish Moji, President Views Exchange, to have his welcome address. Thank you, Vinayji. Friends, on behalf of Views Exchange, I welcome you all to this Manthan 1. The theme of the conference is Manthan. We started with a series of Manthans. So first Manthan we had decided it will be on charitable trust, because there had been so many changes. You will see there are 3 speakers. There are lots of the changes, and if we do not grab the changes and we advise the client, then what will be the impact? The impact will be on you only. So we have to flexible, we have to learn the changes, and accordingly we have to advise. That is why this Manthan 1, friends. On 13th we had come with Manthan 2, audit trail and NBFC. These are the 2 topics. I would request those who have not registered to register on those on that conference also. Then on 27th Saturday, May, we are also having Manthan 3, that is on GST. So lots of changes on GST also, and accordingly we had come with that series. So series of Manthan, friends. Thank you for the overwhelming response from all of you. With this, thank you everyone. Now I request Hariram Agarwal ji to come on dais and have his welcome address. Friends, I on behalf of which Views Exchange as well as Central Kolkata CA Study Circle welcome you all to this Manthan 1 on Charitable Trust, invite for Manthan 2 and 3. In addition to that, on 15th of July, there is annual conference of Central Kolkata CA Study Circle at Hotel Lalit. So I invite all of you to that also. National level speakers have been invited. Shortly you will be receiving the notice, WhatsApp messages as well as joining links also. So the thing is that the time is to scale up. The department, the Ministry of Finance and all other departments have grown up to screw up the whole of this fraternity this way or that way. And lots of changes has been taken up in charitable trust, which each and every of us are learning every day. And we have attended so many programs on charitable trusts also, most of us, and still we find that we know very little about the changes. As more and more we go into the deep of these provisions of trust, the changes in the provisions of trust, we find a newer provisions for that. So we have drafted today's program in such a way that you will know the major part of these intricacies of charitable trust. Hope you all will be benefited from this program. Thank you all. Welcome you all once again. Today we welcome Sri K.K. Chaparia, who is today's chairman. He is a tax expert on the direct tax. He is a rank holder in the Institute of Chartered Accountants exams, having wide experience on direct tax, tax management, merger, amalgamation, company law. He is also a faculty for the tax professionals also. Today we are lucky that he is amongst us as a chairman. With these words, we welcome Sri Chaparia ji. Thank you, Gidhari ji. Chairman's life is quite easy. So I have been in the M2M program. I have been given 2-3 minutes to speak now. Anyway, so okay. Anyway, so the whole program had been designed in such a fashion. I think all of us will be quite reachful after today's session. So what I have been explained is that first speaker today is Mr. Suresh Kejriwal, C.A. Suresh Kejriwal. So he shall be speaking on the registration and the renewal of new as well as existing charitable trust.
donation from one trust to another trust, donation out of corpus or loan, and the audit reports and the maintenance of books of accounts, etc. As you are aware, the concept of registration has gone very significant changes by taxation and other laws, relaxation of certain provisions Act 2020. And if I was just one particular provision has been worrying me ever since this year's bill have been introduced. In the current finance bill, there was a provision that if you don't apply for the re-registration within a prescribed period of time, so then in that case, it is deemed that you have converted yourself into a non-charitable thing. And if that is so, so then that entire corpus will be treated as a accredited income. And let me tell you what is the concept of accredited income. So the accredited income is like this, that whatever is the fair value of those properties as on yourself being converting into a non-charitable organization, that entire income will be subject matter of taxation at the normal rate of tax. I mean that 30% taxation, that tax rates. Learned speaker will be speaking in depth on this detail. So now I was wondering, I mean the speaker will be speaking on that there may be a situation that there are some old trust like say Khatu Shyamji Trust or some trust which are having some old buildings, etc. And they fail to apply within the prescribed period of time. And that property may be valued, say, roughly hundreds of crores of rupees. So will that mean that trust, if they don't fail to apply for re-registration within a prescribed period of time, they will be required to pay so much amount of a tax? I mean, what I'm trying to say, when I was reading the current finance bill as well as the finance minister's speech, I was wondering, should we do the charitable trust works just for the charity? In our office, I have made it clear that we will not do anything for charity. If required, I can give a donation to a trust for the trust for which I am auditing. But then I will definitely charge fees, otherwise I will not get motivation to do the work professionally. Because nowadays it is not like this that it is annual affairs. The charitable trust, we are required to file within 31st May, we have to require to file certain forms. Then again, August, September, October, there are different dates for different forms which the learned speaker will be discussing in the later part of the presentations. So, all of us, I mean, I personally feel that we really require to be thoroughly updated with what are the amendments that happened and be prepared with the amendments which have already happened. Now, donation from one trust to another trust. We are aware that once the fund has been accumulated, we cannot give a donation to other trust. But again, in the current Finance Act, there have been more amendments, like 85% cap is there. So that also, I think, learned speaker will be discussing in depth. Last point was what CA Suresh Kejriwal will be speaking on, is that what will happen with respect to the donation out of corpus. If somebody has donated out of corpus or somebody has made donation out by taking a loan, so when it will be treated as the application, and can there be a concept of carry forward of that extra donation which have been made? So all these topics are quite relevant to be discussed. The second speaker of the day, CA Sanjay Bhattacharya, he will be discussing on the various filing of the forms and returns. Then the last speaker for the today's is Mr. C.A. Ramesh Patodia. He will be discussing on the CSR related issues, recent judgments, especially the Ahmedabad Urban Development Authority and other judgments, the difference in the tax treatment of religious trust and the charitable trust, the concept of that donation box, how the tax treatment will happen on those in case of a mandir, etc. So all these issues will be discussed by C.A. Ramesh Patodia. I think, as I told you in my opening remarks, today being my part being a chairman, so I would like to listen more rather than speak. So I request, I think, the speakers to come on their part. Now I invite Rishi Khatolji to introduce our first speaker, Suresh Kejriwal ji. Thank you, Vinay ji. It is my pleasure to introduce
renowned speaker, C.A. Suresh Kejriwal ji. C.A. Suresh Kejriwal ji is a practicing chartered accountant and founder partner of Agarwal Kejriwal and Company, Chartered Accountants, Kolkata. He is mainly working in the NGO sector and he has wide experience of more than 32 years. And his professional working areas include India and Bangladesh. So he is international speaker. He has been the co-opted member of the Committee for Cooperatives and NPO, not-for-profit organization sectors of the Institute of Chartered Accountants of India for the year 2013-14. He is one of the associate authors of the book Taxation of Trusts and NGOs by Taxman. He is one of the author of book Trust and NGO Ready Reckoner by Taxman. He is one of the persons involved in the preparing the draft of FAQ for NPOs on GST published by the Committee for Cooperatives and NPO sectors, the Institute of Chartered Accountants of India. He has authored Handbook on Control System for NGOs published by FMSF. He has facilitated a number of workshops, seminars organized by the Institute of Chartered Accountants of India. Ladies and gentlemen, please put in a round of applause for our speaker, C.A. Suresh Kejriwal ji. Thank you. Good afternoon. This is my privilege to be part of today's Manthan on Charitable Trust. And I feel it is the right time to have this Manthan because this year quite number of changes by Finance Act 23. And last year changes has also becoming operational this year, 22. And form audit report form has been completely changed. ITR form has been revised. And we always believe that the NGO works to change in one's life and they have a human face. But our assessment is faceless. So earlier, even if we made some mistake, we could plead before the assessing officer, okay, what is the real facts, and the assessment can not be affected. But now because of the faceless assessment, if your written filing is technically wrong, your 10B is wrong, then machine picks up the data and they raise the heavy demand. And then we have to go for 154 and condonation and those things. So I think this is a very, very right time to deliberate on the changes so that we become aware about what are the implications for those changes. And we as a practitioner or we as a professionals, we must understand before we advise the client or before we go for the professional assignment we undertake. So with this word, and as the topic allocated to me is 3 topics basically. Amendment by the Finance Act 23, then requirement for maintenance of books of account, and then little bit of audit. And that's why then time is 2 hours. So I structured my presentation in a way so that I can touch upon all the key issues under these 3 sections. And so to start with, I shall deal with formation of NGO, new scheme of registration, renewals, inter-city donations, application out of corpus. Though each of these topics, formation is itself a topic for 2 hours. So what I will do, I will touch upon only the issues which have an impact from the Finance Act 23. Only the amendment concerning formation, amendment concerning registration. Otherwise, each topic has more to say. So I will make a presentation for 20 to 25 minutes, and that will be followed by discussion. So we will take up the question based upon those aspects within after my presentation. And then I will go to the maintenance of account, again followed by question answer session. And I feel, as because we started late, I can be covering only up to maintenance of account, and I have requested Sanjay Da, who shall be dealing with form number 10, 10B, etc. He will deal upon with audit issues. To begin, before I begin to the topic, I just share the 2 slides which is very, very important for us to understand. First is what is NGO. So, Income Tax Act, FCRA Act, as applicable to NGO, they never define what is NGO. They define what is charitable purpose. So, what we are is not defined. When we call an organization to be an NGO, then how we understand that organization is an NGO or not, that will depend upon their constitution document. And their constitution document should say that, the profit, as an NGO we can earn profit, earn surplus. The restriction is on profit distribution. In a profit sector, the surplus is distributed to the members. But in the NGO, the restriction is on distribution. They can earn a reasonable amount of surplus.
Then NPOs are voluntary in nature. Voluntary means the governing body members, general body members, all participate without their personal interest. Even they can't charge anything for performing their governance role. They can charge towards performing their managerial position, but they can't charge to perform their governance role. And the NGO is self-governing. Self-governing means the donor gives the fund, but they are not in the board. For the beneficiaries, the funds are there, but they are not in the board. The government gives you tax exemption. 30% they are not charging tax, but they are not in the board. So basically, NGOs are self-governed. None of the three parties are in the board. And that's why a number of changes are coming from the government so that they can ensure accountability from the NGOs. Government says you have to spend 85%. Otherwise, most of the NGOs, they will earn income, they will not spend. So this accountability of spending comes from the Income Tax Act. So under various laws, we call it compliances, but they also serve the accountability framework of the NGOs. And lastly, and not very, very important, in a profit sector, at the end of the year, when there is a profit, we understand the business has done good. And when there is a loss, we understand business has not done good. But in the NGO sector, there is no such bottom line approach. In every NGO thinks they are doing good. Because there is no such bottom line approach. So whatever work the NGO is doing, whether that work can be completed within 50 paisa instead of 1 rupee. So that is not being assessed. And every NGO considers that they are doing good work. So this is the first slide. And the second slide is very, very important to understand the meaning of charitable purpose. So meaning of charitable purpose under income tax, as we all know, includes relief to poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment, preservation of monuments, and advancement of any other object of general utility. So this 7 limb constitutes the charitable purpose for Income Tax Act. Now, another act applicable to NGO is FCRA. In FCRA, they have a different definition of charitable purpose, and they are showing economic, education, social and culture, and religious. Again, GST has a 3 different set of meaning of charitable purpose. The point I am making is, when you want to see your coverage under any of the act, you have to see the definition of charitable purpose in that act. You don't think you are covered as under relief to poor under Income Tax Act, then you are also exempt from GST. Because GST has a different meaning of charitable activity. FCRA has a different meaning of charitable activity. So when we are going for the FCRA, we must understand the definition of charitable activity under FCRA. You must refer those acts before you see whether your activity covered under that act or not. Schedule 7, again, a different list of activity. Now, none of the act defined what is relief to poor. And the Income Tax Act, what is relief to poor, there is not defined. What is education, there is not defined. And all these things are defined or through the court decisions. What can be under education, what can be under relief to poor. And now it was not a very difficult part on us because only the NGO has to file the return on which aspect they have spent how much. But from this year, the 10B form, we have to also certify on relief to poor how much the NGO has spent. On education, how much the NGO has spent. That means we must know what is covered under education, what is covered under relief to poor. If there is no understanding on this, our 10B report will be wrong. And recently, a noble judgment in October 2023, this education has taken a very restrictive meaning, only formal education. So the point I am making is we must know what is the coverage under relief to poor, what is the coverage under education. It is very, very important for us to understand. Now coming to today's topic, for the first part, I will deal with concept of process of formation of an NGO, then identification of the legal form, overview of the new scheme of registration, amount of application out of corpus and out of loans and borrowings, amendment to inter-charity donation, and other key amendments, preponement of the timeline for 9 and Form 10, and updated return without the benefit of exemption. Now, NPO is registered in 3 stages. Stage 1, we form the NGO. Form the NGO means second is enabling registration and third is operational registration. When we say form the NGO, then we form the NGO as a society or as a public trust or as a section 8 company. So we are discussing the stage 1, the formation. Like when we start the business, we
decide whether we go for proprietorship or partnership of a company, like when you start an NGO, want to start an NGO, then we have to decide whether we form the NGO as a society or as a trust or as a sex company. So this is the first decision we have to take. And when we choose any of the form, then we become a organization, a legal body. Now, just by formation of that legal body doesn't give you that you are a charitable institution. Your constitution resembles like to be a charitable institutions, but you are not a charitable institutions. So enabling registration is your registration under income tax. So Income Tax Act registration is a central act registration, and once your organization is registered, then you are formally recognized to be a charitable institutions. And in different states, not in West Bengal, they have a charity commission, like in Maharashtra. So if you are in a state where there is charity commission of the state, then you have to also register with that charity commission. So then that means you have to one registration under Income Tax Act and one registration under the state charity commission. For in the state where the charity commission is there. Most of the states doesn't have the charity commission. Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Rajasthan and Maharashtra and Gujarat together. So once we are formed as a legal entity and once we have taken the operational registration under income tax in the charity commission, now the third part of is the operational registrations. Operational registration means if you want to receive foreign fund, the fund from foreign sources, you have to register under FCRA Act. It is not necessary that every NGO should go for FCRA. Now operational registration will depend upon your funding pattern and your activity. If you are going for a school, you have to register for the school authorities. If you are going for the medical, you have to take the health license. So operational registration will depend entirely upon your funding pattern and your activity. Suppose you have more than 20 workers, you have to see the coverage under PF Act. So all those operational registration will depend upon your activity, your funding pattern, total number of strength of the staff. So this is the basic broad framework, how the NGOs are formed, when we are getting an enabling registration, and what are the operational registration. There is no exemption to an NGO that you are NGO है तो आपको ये registration नहीं कराना पड़ेगा. All operational registrations which are applicable to a profit sector are also applicable to a charity sector. Now the key issue is whatever legal form we can have society, we can have a Section 8 company. Under Income Tax Act, once they are registered, there is no difference. So on the basis of legal form, there is no difference. Only under GST, because of the reverse charge, a Section 8 company may be subject to GST, but otherwise under Income Tax Act, there is no difference on the basis of legal form. If we ask what is the preferred option, then I think government is thinking towards moving for a Section 8 company. Because this CSR rules, once 21 becomes very wide-ranging changes, then the government has also brought out changes that only Section 8 company NGOs are eligible to receive foreign CSR grant. The draft has come. Then there was a number of objection to that, and then the government has withdrawn. But by that action, the government has given their mindset very clear. Because trust, nobody knows where the fund comes and goes. There is no transparency in the movement of the funds. But when the Section 8 company, then there is a control mechanism, reporting mechanism. So the government thinks in the future years, Section 8 company is the preferred option for the NGOs. For us, if a client comes and asks us which form of NGO we should form, whether we should form Section 8 company or we should form trust, we understand if we want to have a control over some of the organizations are widely held, like various Chamber of Commerce, and some organizations want to be closely held. If the organization want to be closely held, then Section 8 company is the preferred option, because from the shareholder, we can have a company limited by shareholding, and the shareholding can be controlled by few persons, and the board can be a different size of persons. So from the asset, if the organization has an asset, and organization want to have a closely held, then I think Section 8 company is the preferred option. Then registration is with Niti Aayog is also necessary if we want to receive foreign fund, or as per the new income tax amendment rules, if the NGO wants to receive government grant or intend to receive government grant, then they must have the Darpan ID. That means registration with Niti Aayog. So these are the few changes. Now coming to the overview of the new scheme of registration. We all know NGOs were required to be registered under Section 12A, which we all have. And then 12AB has replaced 12A. So all the existing 12A registered organizations has
applied again for a fresh 12 AB registration. Perpetuity of registration has been withdrawn. Every registration is valid for 5 years. Again, there is no continuation of delay. If the application has to be submitted within a given time frame, you have to submit within that time frame. There is no provision for continuation of delay. Form number 10, 2 independent applications were to be made. One application for 12 baby registration and one application for ATG. In some of the cases, the NGOs have made only one application. They thought one application will suffice both the purposes. So in those cases, only one registration has come and one registration has not come. And again, provisional registration is for 3 years, and it has to be applied again for a converting provisional registration to a normal registration. CBT has issued circular number 11, substituting the conditions for registration. When the registration started coming, the first part of the operational scheme, all the registrations were called provisional registrations. Even the registration were for 5 years, but the name of the registration was provisional. And there are a number of conditions. No bank account can be opened without permission, no sale of the asset can be taken. And those conditions were not part of the section 11, 12, 13. And those conditions were different than what is the law provides for. And then a judgment has come from the Bombay, and then the Bombay judgment has struck down those additional conditions. And then circular number 1122, government has given a circular explaining all the provisional words should be replaced with only registration, because provisional is only for 3 years registration, not for 5 years. And all the conditions they have deleted. And I will finish. And then all the conditions have been newly inserted. And the conditions becomes, you have to make the applications within time limit for renewal, for converting, and those becomes part of the conditions. The last date of submitting form number 10A was earlier 31st December, but because of circular, it becomes 25th November 22. And this circular has created havoc, which Chapari was telling the exit tax implication. Because of this circular, all the NGOs who have not furnished their application for regularizing their from 12A to 12AB, they will be under exit tax for this financial year. And the last date of submitting converting the provisional registration to normal registration was 30th September. Just I have given this last date because when we go for the exit tax, these dates are very, very important. Now, just give a brief on the registration process. First was the application for revaluation has to be made by all the NGOs, and that was for 5 years. The second type of registration was we have to apply for new. The organization which is not registered under section 12A, they can apply for a fresh registration, and those registrations were called provisional registrations. And the provisional registration was valid for 3 years, and they have to apply again within 6 months of the expiry of the registration or within 6 months of the commencement of the charitable activity. So, but most of the NGOs thought that they have received 3 years registration. But if they started commence their activity after 1 month, so within 6 months they have to submit their application for converting the provisional registration to normal registration. And then when your object gets changed, you have to revalidate the registration. And then if your application, suppose there are 2 regimes, 1023 regime and 111213 regime. If you are holding both the registration, you are holding approval, you are holding 12 baby registration also. So the day you are holding both the registration, your 12 baby becomes inoperative as per section 11.7. And when you want to, at a later date, you want to make 12 baby operative, then again you go for a fresh registration under this clause. And all the registration has to be renewed every 5 years. So basically these 4 types of registrations are now provided, and all the 4 types of registrations should be followed by 5 years registration, renewal of 5 years, every 5 years. And the amendment by 2023 is only in respect of the application for new cases of provisional registration. Only the registration marked in reading. All registration, no change. Whatever changes are there, only in the scheme of provisional registration. So basically, what is the changes for the provisional registration? The de facto rollback of provisional registration for existing organization. Before this 12 baby regime, what was the process? We are making application for registration. There was a hearing, and after that hearing, CIT exemption used to give us a registration, and that registration becomes perpetual. Now that process they have started for those charitable organizations who have though commenced their activity, but they are not registered under section 12 baby. That means existing organizations already commenced their activity,
but not having 12 baby registration, and they are applying first time, then for them, they can apply only once, as per the Amendment Act. They are not required to apply 2 times, one for provisional and one for again regularizing the provisional to normal. If the NGO has not started their activity, they have to apply 2 times, one for provisional registration and one for converting that provisional registration to regular registrations after commencement of the activity. Now, while making amendment, they put one more condition. So far, the scheme was very good and as per the intended law, but they have said, if you want to apply, then those NGOs whose income was exempt earlier under Section 12A or under 12AB, they are not eligible to apply again. That means in most of the cases we find we couldn't apply for 12AB for 5 years, and we applied for provisional registrations because the 3 years window was always there. But after October 23, if those NGOs have not applied for regularizing their registration, and they were used to be exempt under Section 12AB before, so after October 23, the window will not be there to apply for a provisional registration also. So that means an organization which has already taken the benefit of income tax registration, if their registration has been cancelled or they have not applied again, then they are not eligible to apply again after October 23. So and that's why we are advising all the NGOs who failed to apply by till now, they can regularize by having a provisional registration before October 23, because this October 23 window is still open. I don't understand why this clause is inserted, because their rationale for amendment nowhere talks about this. The rationale for amendment was only because there is no need for 2 applications when the activity has already been commenced. They should file only 1 application. Now, second amendment is very have an implication this. No retrospective benefit of registration. Pre-amended law, the exemption under Section 11 and 12 shall be available for assessment year for which the assessment proceedings were pending. That means, suppose the new NGO comes to us to regularizing their registration, and we are seeing their past 7 years assessment, past 7 years accounting records, and we find if we follow 12 baby registration, they are 85% they have spent, they have invested in 11.5 more, then we are advising them to go for registration, because once the registration is granted, that registration is granted from the current date, but that can be also used for the back pending assessments. So all the pending assessment they will deem to be a registered organization. But now the department says, as because the NGOs who have not commenced the activity, they can also furnish application, so there is no need for such provision. So by the Finance Act 23, this retro benefit of the registration certificate given to an NGO has been withdrawn. And what they did, they have deleted this proviso from Section 12A. And what is the implication? This will discourage the existing organizations having past 7-8 years working to come forward, because they will be subject to tax because of their past financial dealings. Previously, they were not subject to tax because of the registration benefit was applicable to back years also. And it is also not very clarified. This deletion is from which year? Suppose your registration has been granted in February 23. You have granted registration when this back year's benefit was there. But this section was deleted from 1/4/23 without any saving clause. So assessing officer may say, at the time of assessment, this proviso doesn't exist. So how can I write that proviso? So it would have been better if the department clarifies that this retro benefit will not be available to registration granted on or after 1/4/23, to make the things very simple. Otherwise, it will go for a litigation. Again, the third amendment for registration process, giving incomplete and false information can attract cancellation. We all know the first leg of processing of application without asking any question. Whatever we have submitted, the computer has processed and you have been granted 5 years registration or provisional registrations. Only converting provisional to normal, they require the hearing. So pre-amended position, cancellation proceedings can be initiated if the commissioner has noticed the occurrence of a specified violation. And the rule says, if the registration has been obtained
on incomplete or false or incorrect information, the CIT has a power to cancel the registration after giving an opportunity of being heard. So rules has given the power to the CIT to cancel the registration after giving an opportunity of being heard, but there is just no power coming from the Act. So rules power was without any mandate from the Act. So I understand this amendment has come just to have the mandate to the CIT, which is mentioned in the rules, corresponding in the Act also. And so उसमें उसको भी इनका मान रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें है, हमेशा ये डिबेट रहेगा कि स्पेसिफिक ग्रांट आपका इनकम है कि नहीं है, लेकिन यदि अपने ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को देखते हुए उसको इनकम मान कर वो ले लीजिए 15%। दोनों चीज़ सर लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी है जिस टाइम हम रजिस्ट्रेशन लिए थे जो मेंबर थे, बाद में नेक्स्ट ईयर मेंबर चेंज हो गए, फिर डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि नहीं सर? हर साल मेंबर चेंजेस होते हैं। मेंबर चेंज के लिए कोई इंटीमेशन का दरकार नहीं है। जो माने पोस्ट होल्डर हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स का चेंज जो होता है उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसे हर साल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चेंज होते हैं, वही वो आपको रिटर्न में लिखना पड़ता है, दैट्स ऑल। नहीं तो रजिस्ट्रेशन नया नहीं पड़ेगा ना? इसमें जो कन्फ्यूजन हो रहा है ना, वो क्या हुआ कि पहले जो सर्टिफिकेट मिली आपको 5 साल वाली जो कन्वर्ट हुआ था ना, तो उसमें उन्होंने बहुत से कंडीशंस लगा दी थी। उसमें वन ऑफ द कंडीशन जो वो बोल रहे हैं वो भी लिखा हुआ है कि कोई भी यदि बोर्ड में चेंज होगा तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, लेकिन वो रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो मैंने अपने उसमें कवर भी किया था कि वो जून या जुलाई 2022 को या 21 को डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर दिया कि हमारी जो भी कंडीशंस वहाँ बोली हुई है उसको नल एंड वॉइड माना जाए, उसको उन्होंने हटा दिया है। तो आप जो बोल रहे हैं उस कंडीशंस वहाँ लिखी हुई है आपके रेजिडेंस सर्टिफिकेट में, उसको देख क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो कंडीशंस अभी वैलिड नहीं है, डिपार्टमेंट के सर्कुलर से वो हट गई हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, अदर्स इनकम में जो डालना था हम लोगों को, वायलेशन ऑफ लॉ के कारण से डाल रहे थे अमाउंट, तो जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वगैरह है उसको कहाँ पे डालेंगे? एआई शेड्यूल में डालेंगे। एआई शेड्यूल है आईटीआर का। ओके, एआई शेड्यूल में सारी इनकम आती है ट्रस्ट प्रॉपर्टी की। ठीक है, थैंक यू। Thank you, friends. I'm fortunate enough to give both of chance to learned speaker here. We started with Suresh Kejriwal ji, who started with the registration of the trust and what are the implications and what are the new rules. He has given complete details for that one. Thereafter, we came to filing of the ITR, and it was very well. Although we could not understood anything how to file the ITR, but it was clearly mentioned by Sanjay ji how should we go ahead with the idea. And thereafter thereafter Padudia ji, Ramesh ji, he explained very clearly the judgments which were there, and particularly for the Ahmedabad for the GPU. So we are very much delighted to have all the three speakers on one stage, and we are also very much delighted for the good audience who is here since 1 p.m. onwards. So with these remarks, I say thank you to each and everyone. Thanks. And we request delegates to kindly come forward for the memento. I'll ask Keria ji to provide memento to Padudia ji. I'll ask please give memento to Kapadia ji. Chairman sir. Thanks.
बेसिकली आफ्टर इंसर्शन ऑफ रूल 17AA विथ इफेक्ट फ्रॉम 10/8/22, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 10 अगस्त 22 को रूल 17AA आए हैं, जैसे कि वो गाइड कर रहे हैं कि आपको बुक्स अकाउंट कैसे रखने हैं, एंड दे आर सेइंग बुक्स अकाउंट को उन्होंने डिफाइन किया है, दे आर सेइंग व्हाट अदर डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू मेंटेन, दे आर सेइंग मैनर ऑफ कीपिंग बुक्स अकाउंट, दे आर सेइंग एट विच प्लेस यू हैव टू मेंटेन द बुक्स अकाउंट, एंड दे आर आल्सो सेइंग फॉर अप टू विच पीरियड यू हैव टू प्रिजर्व द बुक्स अकाउंट। सो बेसिकली दे हैव डिफाइंड बुक्स अकाउंट किसको बोलते हैं, आप उसको कैसे रखना है। दे हैव सेड कि आपको उस बुक्स को कैसे रखना है, उसको बुक्स को कहाँ रखना है, रजिस्टर ऑफिस में कि दूसरे प्लेस में, आपको कितने सालों तक उस बुक्स को प्रिजर्व करना है। रूल 17AA 10 अगस्त से ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है, जो सब एनजीओ को ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज है। ये फाइनेंस एक्ट 22 हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल रिक्वायरमेंट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट बाय द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन 12AB1 विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट 23-24। एंड द टेक्स्ट क्या बोलता है, वेयर द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट एज कंप्यूटेड इन द एक्ट विदाउट गिविंग बेनिफिट ऑफ सेक्शन 11-12 एक्सीड्स द अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, माने 2.5 लाख रुपए से अधिक आपकी इनकम है, क्रॉस इनकम, विदाउट एनी एप्लीकेशन को लेस किए हुए, देन यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड बुक्स अकाउंट क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट साथ में बोल रहे हैं। देखिए द वर्ड इज बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट, एंड अदर डॉक्यूमेंट इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट हैव बीन केप्ट एंड मेंटेन्ड इन सच फॉर्म, मैनर एंड सच प्लेस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो आपको तीनों चीज़ों को देखनी है, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या है, इफ द ट्रस्ट फेल्स टू comply with the conditions of 12AB1, then the benefit of exemption of 11-12 shall not be available. But we all know section 1310 and 1311 has been inserted by Finance Act 22 with effect from 23-24. So this violation will come under section 1310 and 11, and under 1310 and 11 आपको इनकम को रिकम्प्यूट करना पड़ेगा, जिसमें कि आपके रेवेन्यू खर्चे बाद मिल जाएंगे, आपको इंटरसिटी डोनेशन बाद नहीं मिलेगा। तो उसमें उन्होंने एक डिफरेंट मेथड दिया है, उस मेथड से जो इनकम आएगी उस पर आपको टैक्स देना है। एंड 11(4)A में यदि आप कोई इंसिडेंटल बिजनेस कर रहे हैं एंड वो अकाउंट्स आपको सेपरेट रखना था, आपने नहीं रखा, तो वो वन ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यूएशन है सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। 12AB4 में स्पेशल वैल्यूएशन में उसको इंक्लूड कर लिया है। तो यदि अपने बुक्स अकाउंट नहीं रख रहे हैं, दैट मीन्स योर रजिस्ट्रेशन बेनिफिट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर विल नॉट बी अवेलेबल, योर इनकम शैल बी कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 1310 and 11, a newly inserted section, and if you fail to maintain the separate books of account for under 11(4)A, then your registration shall be subject to cancellation because this is one of the specified violation. अब आते हैं फ्रेमिंग ऑफ अकाउंटिंग स्ट्रक्चर एंड की कॉमन इश्यूज। देखिए यदि वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अपने लिए घर बनाना चाहेंगे एंड वी जस्ट से टू द कॉन्ट्रैक्टर कि हमारे लिए घर बना दो, तो वो 3 घर बना देगा, एक रसोई बना देगा, आपको उसकी रिक्वायरमेंट 2 घर की भी हो सकती है। दैट मीन्स यू हैव टू योरसेल्फ डिसाइड कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड अपॉन दैट देन यू ऑर्डर द वेंडर टू बिल्ड। तो वैसे ही एनजीओ में वी हैव टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। कोई भी अकाउंटिंग स्ट्रक्चर टैली में अपने डालेंगे उसके पहले वी मस्ट नो द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड बेस्ड अपॉन दैट वी हैव टू फ्रेम आवर अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। इफ वी डोंट डू दैट देन योर अकाउंटिंग आउटपुट विल नॉट बी एलिजिबल टू मीट द इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। आपकी इन्फॉर्मेशन नीड वहाँ से आउटपुट आएंगी, बट अगेन आपको हमेशा एक्सेल में काम करते रहना पड़ेगा, इसको रिपोर्ट देना, उसको रिपोर्ट देना, उसको रिपोर्ट देना। तो फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड उसके हिसाब से ही आप अपना अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करिए। व्हेन वी से अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो यहाँ पर एनजीओ में मल्टीप्लिसिटी का बहुत जोर है। एक्चुअली मल्टीप्लिसिटी मीन्स आपके बैंक अकाउंट मल्टीपल बोलते हैं लोग। एफसीआर का अलग बैंक अकाउंट, इनकम जनरेशन प्रोग्राम का अलग बैंक अकाउंट, दैट मीन्स लोकल ग्रांट का अलग बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है। तो देयर मल्टीपल बैंक अकाउंट, बुक्स अकाउंट मल्टीपल, एफसी फंड के अलग, नॉन एफसी के अलग, इनकम जनरेशन के अलग, तो मल्टीपल बुक्स हो गई आपके पास। डोनर मल्टीपल होते हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, तो मल्टीपल डोनर है। लोकेशंस आपके डिफरेंट हैं, फिर आपके रिक्वायरमेंट जो मैं बोल रहा था वो डिफरेंट है, एंड अकाउंटिंग हेड्स डिफरेंट है सबके। व्हेन वी टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट, डोनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अकाउंट्स से जाना पड़ेगा। आपका स्टेटरी ऑथोरिटीज़ है, इनकम टैक्स से, एफसीआर, उनकी रिपोर्ट आपको देनी है। अब तो नया 10BB फॉर्म आ गया, यदि वैसा स्ट्रक्चर नहीं आपका नहीं होगा तो आप 10BB फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पाएंगे। देन बोर्ड की रिक्वायरमेंट है अकाउंट से, एंड बेनिफिशियरी की रिक्वायरमेंट है। तो जब तक ये सारे रिक्वायरमेंट को अपने टेबुलेट नहीं करेंगे बिफोर वी बिल्ड अप आवर अकाउंटिंग स्ट्रक्चर, तब तक आपका आउटपुट जो है वो रेलिवेंट नहीं रहेगा। मे बी 1 रिपोर्ट के लिए रहेगा, लेकिन सब्सिक्वेंट रिपोर्ट के लिए आपको डाटा को एक्सेल में कन्वर्ट करके आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है।
और अकाउंटिंग हेड का भी बहुत दिक्कत है। लीगल अकाउंटिंग हेड जो है, लीगल, फंक्शनल, नेचुरल एंड डोनर। यदि आपके पास खुद के अकाउंटिंग चार्ट नहीं रहेगा अकाउंटिंग हेड्स के, तो डोनर आपको ट्रैवलिंग को बोलेगा कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन बोल देंगे, कोई दूसरा बोलेगा मोबिलिटी बोल देंगे। आपको यही नहीं मालूम चलेगा कि टोटल ट्रैवलिंग में कितना खर्चा कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। सो अल्टीमेटली एनजीओ में इफ यू वांट टू कंट्रोल द कॉस्ट, योर नेचुरल क्लासिफिकेशन मस्ट बी देयर। अल्टीमेटली खर्चे तो नेचुरल क्लासिफिकेशन से चलते हैं। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ अकाउंटिंग हेड्स की रिक्वायरमेंट आएगी। विद इन दैट फ्रेमवर्क यू हैव टू डिजाइन योर अकाउंटिंग चार्ट कि कौन से अकाउंटिंग हेड्स लेके हमको चलने हैं और किसको हमको कॉस्ट सेंटर में डालना है, किसको हमको ग्रुप में डालना है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंड अकाउंटिंग कंसेप्ट एनजीओज में, बिकॉज डिफरेंट डोनर पैसा देते हैं एंड दे वांटेड कि उनका ओपनिंग बैलेंस, उनका क्लोजिंग बैलेंस सिस्टम से निकल जाए, अकाउंटिंग सिस्टम से। इन आप यदि एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं तो उसमें डोनर वाइज एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस कैसे निकलेगा? उस कंसेप्ट को अपने बोलते हैं फंड अकाउंटिंग कंसेप्ट, जहाँ की कॉस्ट सेंटर के थ्रू आपका उस डोनर का कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना आपको उसने ग्रांट दिया, कितना आपने खर्चा किया, कितना क्लोजिंग बैलेंस निकला। तो आपके अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को फंड अकाउंटिंग कंसेप्ट में इनबिल्ड करना पड़ेगा यदि आपकी डोनर बेस्ड फंडिंग है तो। नोशनल एक्सपेंस का बहुत बड़ा खेला होता है, कारण कि बहुत सी डोनर क्या करती हैं, आपके पास बिल्डिंग पड़ी हुई है तो बिल्डिंग का तो कॉस्ट पहले से निकल गया है, देन दे अलाउ सम टू चार्ज समथिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग, टू चार्ज इन देयर प्रोजेक्ट। भाई बिल्डिंग का था तो बोले कि आप 10,000 रुपया रेंट का चार्ज कर लीजिए, बट एक्चुअली आर नॉट पेइंग रेंट, तो दैट कैन बी चार्ज टू डोनर बट इज नॉट अ लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस होने से आपकी इस पॉकेट से पैसा दूसरे पॉकेट में आना पड़ेगा, इससे यहाँ पर आने से ये लीगल एक्सपेंस नहीं है, ये चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग होकर रिस्ट्रिक्टेड फंड अनरिस्ट्रिक्टेड में मूव हो जा रहा है, बट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पैसा नहीं जा रहा है। तो दिस चार्जिंग दो कंस्टिट्यूट एक्सपेंस ऑफ द डोनर एजेंसी, बट दिस इज नॉट अ लीगल एक्सपेंस। एफसीआर में नहीं रहेगा, इनकम टैक्स में नहीं रहेगा। तो हाउ टू अकाउंट इट फॉर, हाउ टू रिपोर्ट दैट? देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड यूटिलाइजेशन। बहुत से डोनर आपको बोलेंगे हमको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत से बोलेंगे हमको रिपोर्ट चाहिए। यूटिलाइजेशन इज मोर देन पेमेंट। आपने मेडिसिन का पेमेंट परचेज किया, मेडिसिन आपके स्टॉक में आ गई, आपने पेमेंट कर दिया, इट इज़ पेमेंट, इट इज़ नॉट यूटिलाइजेशन। आपने मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया बेनिफिशियरी को, उनका मस्टर रोल बन गया कि उनको मेडिसिन मिल गया है, देन इट इज यूटिलाइजेशन। तो एफसीआर की अकाउंटिंग जो है यूटिलाइजेशन बेस्ड चलती है। एफसीआर में लॉ ही है कि यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द यूटिलाइजेशन, नॉट ओनली फॉर द पेमेंट। बट वी डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पेमेंट एंड यूटिलाइजेशन। तो अपने पेमेंट को यूटिलाइजेशन मान लेते हैं कि फंड यूटिलाइज हो गया, लेकिन फंड यूटिलाइज होकर दूसरा एसेट आपके पास में आ गया, आपके पास मेडिसिन आ गया है, वो तो यूटिलाइज आपने नहीं किया है। तो यू मस्ट हैव अ रिकॉर्ड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम विच इज बीइंग परचेज आउट ऑफ दैट मनी। ठीक है, ये सम ऑफ द की कंसेप्ट आपको बताया कि जो एज एन एनजीओ के अकाउंटिंग के लिए आपको जानना जरूरी है। अब फर्स्ट प्रश्न आता है कि विच मेथड ऑफ अकाउंटिंग टू बी फॉलोड फॉर द इनकम टैक्स। Section 11 and Section 12(1) uses the word received as against derived, and therefore the income including voluntary contribution should always be treated as income on receipt basis while preparing the computation of income under the Income Tax Act. Section 11 में देखिएगा वर्ड स्टार्ट किया रिसिप्ट से, एंड 12(1) में भी रिसिप्ट किया रिसिप्ट से। तो बेसिकली इनकम टैक्स जो है उसको रिसिप्ट के हिसाब से मान रहा है इनकम को। एप्लीकेशन का फाइनेंस एक्ट 22 में एक चेंज आ गया है, एंड वो बोल दिया कि आपके सारे एप्लीकेशन जो आपको कैश पेमेंट बेसिस से मिलेंगे, कोई भी प्रोविजन बेसिस में नहीं मिलेगा। ये 22 से चेंज, फाइनेंस एक्ट 22 में चेंज आ गया है। दैट मीन्स मेजरली ऑल इनकम एंड ऑल आपका जो एक्सपेंस एप्लीकेशन है हैज़ टू बी ऑन कैश बेसिस। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन कब आता है, एक्सपेंशन 1 टू सेक्शन 11(1) जो अपने फॉर्म 9 में जमा करते हैं, एंड वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऑप्शन टू बी एक्साइज इफ इनकम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। वो बोलते हैं कि आप 9 फॉर्म जो है आपको इनकम नहीं मिली है, या इनकम सब्सिक्वेंट ईयर के लिए थी, वो इनकम एडवांस में मिल गई आपको। तो जो नॉट रिसिप्ट उन्होंने कह दिया है जो वन ऑफ द एक्सप्रेशन जो 9 देने के लिए, वहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है कि जब कैश बेसिस बोल रहे हैं चार्जिंग सेक्शन में, तो 9 की नॉट रिसिप्ट के बाद आने की दरकार नहीं थी, एंड दैट्स क्रिएट्स द कन्फ्यूजन। उसका क्लियरिटी अभी तक आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बट वी फील कि जो टीडीएस वाला खेला है ना, जहाँ पर टीडीएस आपको कट रहा है, टू दैट एक्सटेंट यू प्रोवाइड ऑन एक्यूरेट बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स रिपोर्टिंग बोल रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर द पर्पस ऑफ जनरल पर्पस रिपोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स पर्पस रिपोर्ट, जिससे कि आपको कंपटीशन बनाने हैं। उसमें आपको कैश बेसिस इज द अकाउंटिंग, जो कि रिसिप्ट के लिए बोल रही है, जो कि पेमेंट मेजरली ऑल पेमेंट के लिए बोल रही है। एक्सप्लेनेशन 1 का जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, उसको अपने एडवांटेज में लेते हुए टीडीएस का क्रेडिट लेने के लिए आप जो एक्रूवल्स जो इनकम की है उसको आप प्रोवाइड कर लीजिए, लेकिन मेजरली आपको करना है कैश बेसिस में। अब आते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अंडर इनकम टैक्स।
माने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का। अभी तक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की जो बात की है अपने कंसेप्ट की बात कर रहे थे। अब इनकम टैक्स का जो आपको ITR 7 भरना है, आपको 10BB भरना है, तो आपका अकाउंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए रूल 17AA आया। रूल 17AA talks about books of account, other document, manner of keeping of books of account, place of maintaining and period for which books of account should be kept. अब बुक्स ऑफ अकाउंट में बोल रहे हैं द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल कंसिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: कैश बुक, लेजर, जर्नल, copies of the bill, whether machine numbered or otherwise serially numbered, whenever such bills are issued by the SSC, and copies or contrafiles of some machine numbered or otherwise serially numbered receipts. That means जहाँ कहीं भी अपने बिल दे रहे हैं एज एन NGO या अपने डोनेशन की रिसीट दे रहे हैं, उसकी सीरियली नंबर अपने पास कॉपी रहनी चाहिए। दैट्स नंबरिंग तो मस्ट हो गया, उसी कॉपी भी अपने को रखनी है जहाँ पर आपको इनकम आ रही है। ओरिजिनल बिल्स वेयर एवर इशू टू द पर्सन मीन्स NGO एंड रिसीट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय द पर्सन। आपको जो वेंडर आपको बिल दे रहा है उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको चाहिए, एंड उसको जो पेमेंट करके जो रिसीट दे रहा है उसकी रिसीट भी आपको रखनी है। अब इन द आफ्टर कोविड सब बिल आ रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी मेल में आ रहे हैं, उसी को अपने समझ पकड़ रहे हैं। अब इस ओरिजिनल बिल का मतलब उसका क्या होगा अपने वी हैव टू एनालाइज। देन एनी अदर बुक दैट मे बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन ऑर्डर टू गिव इट टू एन फेयर व्यू। लेकिन ये चार तो आपको जरूरी है एज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अगेन दे आर सेइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एज रेफर्ड टू इन क्लॉज ए फॉर बिजनेस अंडरटेकिंग इन सबसेक्शन 11(4). 11(4) बोल रहा है कि आप बिजनेस जो है हेड एज अंडर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो इनकम फ्रॉम ट्रस्ट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। यदि वैसा कोई बिजनेस आपके पास में है देन यूर मेंटेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड 11(4) का बिजनेस का एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अकाउंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कितने बुक्स रखनी है NGO को? एक FCRA के लिए सेपरेट बुक्स रहनी जरूरी है, एक FCRA के लिए तो नॉन FC ग्रांट का अलग से हो गया आपका, 2 बुक्स तो आपके पक्की हो गई। फिर 11(4) का यदि बिजनेस है तो 11(4) का अलग से बुक्स होगा, 11(4) का बिजनेस है तो अलग से बुक्स हो गया। ठीक है, ये 4 बुक्स तो एकदम पक्की हो गई। अब इस 4 बुक्स में होता क्या है कि NGO के पास खुद का कैसा पैसा है नहीं मालूम चलता है, उनका जनरल फंड कितना हुआ, वो कहाँ रखेंगे आप? वो तो खाली नॉन FC ग्रांट में रख सकते हैं, तो उनको अपनी वर्थ नहीं निकल पाती है। तो वी एडवाइज नॉट एज ए स्टेटरी रिक्वायरमेंट कि अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का एक अलग से बुक्स रखिए, कि जो फंड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दो इट इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड। तो बेसिकली 4 बुक्स तो NGO को मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गई। अब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट फॉर फ्रेमिंग ऑफ अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ एप्लीकेशन जो अपने फर्स्ट सेशन में बात कर रहे थे। फॉर बिजनेस एंटिटी एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज अ चार्ज अगेंस्ट इनकम इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर इज फंडेड। आप लोन लेके भी खर्चा कर रहे हैं तो PL में चार्ज कर सकते हैं, आपको खर्चा बाद मिलेगा, और अपने इनकम से भी कर रहे हैं तो चार्ज मिलेगा आपको। लेकिन इनकम टैक्स में चैरिटी लॉ में वैसा नहीं है। चैरिटी लॉ में द सोर्स इज इंपॉर्टेंट, and source can be income out of during the year, income can be loan and borrowing, income out of corpus, income out of other accumulated funds, and each source of application has a different implication. तो आपके अकाउंटिंग सोर्स स्ट्रक्चर में आपके खर्चे तो निकल गए, लेकिन खर्चे को फंडिंग कैसे हुआ है वो यदि नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। वो जो खर्चा हुआ है वो लोन से हुआ है कि करंट इनकम से हुआ है कि एक्यूमुलेटेड फंड से हुआ है कि कॉर्पस फंड के पैसे से हुआ है, यदि आपका अकाउंटिंग स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपका कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे आप। ठीक है। सेकेंड, ITR में पर्पस वाइज रिपोर्टिंग थी कि प्रत्येक लिम में कितना खर्चा करना है, जो 10BB में भी आ गया है। आपके अकाउंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्पस वाइज का कोई कोड ही नहीं है, अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम को डिफाइन कर रहे हैं। लीव टू पूरे में कितना खर्चा है सब आता ही नहीं है वहाँ पर। व्हेन 10BD जो अपने जमा कर रहे हैं तो प्रत्येक डोनर का जो पैसा है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करने बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रांट, कॉर्पस ग्रांट, अदर ग्रांट। आप सारे डोनेशन को एक ही जगह लेजर में लेके जा रहे हैं, तो यदि एक ही आदमी ने 3 टाइप का डोनेशन दिया है तो उसका 10BD फॉर्म फिलअप करने में अगेन आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड डाटा को निकालना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ऐसा करिए समझ करके कि आपको बाद में कमती टाइम काम करना पड़े, एंड जो काम करें उसमें गलतियाँ कमती हों। एक्सेल में पुट करना ही माने गलतियाँ रह सकती है। पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन आपको निकालना है, कॉर्पस फंड का कितना पैसा मिला और कितना आपने इन्वेस्ट किया 11(5) में, आपने फॉर्म 9A के लिए कितना एक्यूमुलेट किया था, वो कब खर्चा करना है। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड इसको नहीं करेंगे, पैसे को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तो आपको अलग से कंपटीशन के नीचे कॉलम देके करना पड़ेगा
या ITR से खोजना पड़ेगा आपने खर्चा किया कि नहीं किया। फॉर्म 10 का जो 5 साल का जो आपका ऑब्लिगेशन है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपको हमेशा ITR देखना पड़ेगा या कंपटीशन के नीचे का देखना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके अकाउंटिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपको बेसिकली आपके पूरे रिक्वायरमेंट को देख करके आपको फ्रेम करनी पड़ेगी। दिस इज माई फर्स्ट सबमिशन। अब जो रूल 17 है बोल रहा है कि कैसे आपको बुक्स रखनी है, वो बोल रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट कैन बी केप्ट इन रिटन फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डिजिटल फॉर्म और एज ए प्रिंट आउट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डिजिटल फॉर्म और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा स्टोरेज डिवाइस। आई थिंक इसमें अपने को संजीव भैया की हेल्प लेनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है, डिजिटल फॉर्म क्या होता है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये बेसिकली किस किस फॉर्म में आपको बुक्स अकाउंट रख सकते हैं उसकी बात लोग कर रहे हैं। अगेन कहाँ रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट एंड मेंटेन्ड एट द रजिस्टर ऑफिस। उनका वो है कि आपको रजिस्टर ऑफिस में सारी बुक्स रखनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी वर्किंग लोकेशन डिफरेंट रहती हैं। इस वर्किंग लोकेशन में आपका अकाउंटिंग सेंटर रहता है, वहाँ से हिसाब बन कर आते हैं, आप एक्सेल में रिपोर्ट को फिर मर्ज करते हैं। या बहुत जगह रजिस्टर ऑफिस में कुछ रहता ही नहीं है, हेड ऑफिस में सारा काम होता है। तो इनका फर्स्ट है कि यू मस्ट मेंटेन योर अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगेन दे आर सेइंग हाउएवर all or any of the books of account or document are kept at any other place other than the register office, then the board should inform the assessing officer within 7 days of the decision कि हमारी बुक्स रजिस्टर ऑफिस में नहीं है, हमारी बुक्स रजिस्टर ऑफिस के साथ में यहाँ भी रह रही है। तो वो इंटीमेशन विदिन 7 डेज देना है आपको। 10/8 को जब अमेंडमेंट आया था, मैंने 17 तारीख तक आपको इंटीमेशन देना था कि हमारी बुक्स रजिस्टर ऑफिस में नहीं है, यहाँ आ रही है। और आपको जो 10B फॉर्म जो बतलाएंगे, 10B फॉर्म में आपको बतलाना भी है कि आपकी बुक्स रजिस्टर ऑफिस छोड़ के कहाँ रह रही है और उसका इंटीमेशन गया है कि नहीं गया है। एज बिकॉज इस इंटीमेशन का कोई डिफ़ॉल्ट का कोई नहीं है तो उसको अभी आप लोग जमा कर सकते हैं। माने एट फास्ट आप जो है इस रूल को रेफर करके आपके एक बोर्ड का रेजोल्यूशन होगा, एक लेटर के माध्यम से। लेटर कौन साइन करेगा? जो कि आपका ITR साइन कर रहा है, उससे आपको साइन करा के इसको भेजना पड़ेगा। मैं उसी का मैं बोला कि संजीव भैया से मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, जो डिजिटल फॉर्म में सब लिखा हुआ है ना वो समझना पड़ेगा संजीव भैया से। एंड वो लोग बोल रहे हैं कि आपको जो बुक्स अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट है वो 10 साल के लिए रखना है। ये सारी बुक्स अकाउंट जो है आपको 10 साल के लिए रखनी है। एंड यदि 10 साल के दरमियान आपका कोई 148 का प्रोसेसिंग इनिशिएट हो गया है तो बुक्स अकाउंट को फर्दर भी आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा टिल द मैटर गेट सेटल्ड। तो बेसिकली आपको 10 ईयर्स तक करना है। यहाँ तक तो भी ठीक है। अब डॉक्यूमेंट जो आपको अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट जो उन्होंने डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार भैया। अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट में वो कहा है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वो बोल रहे हैं डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन, कि आपका प्रोजेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन के डिटेल्स एक अलग से रजिस्टर में रखिए आप। सेकंड डिटेल्स ऑफ इनकम, इनकम को भी आप बोल रहे हैं रिकॉर्ड ऑफ इनकम ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपको इनकम कहाँ से हुई उसका अलग से आपके अकाउंट्स में तो ही है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सारी है, लेकिन वो अदर डॉक्यूमेंट में बोल रहे हैं। अदर डॉक्यूमेंट माने क्या होगा ये भी क्लियरिटी नहीं है कि सारे इन्फॉर्मेशन जो ये बोल रहे हैं सारी चीज़ मोस्ट ऑफ द चीजेज आर इन द अकाउंटिंग सिस्टम इटसेल्फ। देन डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन, रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेशन आउट ऑफ इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेशन आउट ऑफ इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर, कि अपने तो प्रीवियस ईयर की इनकम को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों का अलग अलग उन्होंने मांगा है। फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, रिकॉर्ड ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेड विद स्पेसिफिक डायरेक्शन टुवर्ड्स कॉर्पस एंड रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड अंडर ATG 2B, जो कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल परमिशन मिलता है ATG में, उसके उनके लिए बोला हुआ है ये। रिकॉर्ड ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स, रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय द SSC, रिकॉर्ड ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन एंड उनके साथ क्या ट्रांजेक्शन्स हुए आपके, और एनी अदर डिटेल्स। तो आपके ये 10 डॉक्यूमेंट जो है ना, ये पहले आपको स्टेटरी नहीं रखने थे, आप कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से रखते थे कि स्पेसिफाइड पर्सन का रजिस्टर रख लो या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का रजिस्टर रख लो एज ए कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बट नाउ दिस 10 रजिस्टर जो है 10 इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें मैं इसको मैं यहाँ भी क्लोज कर सकता हूँ, कारण कि हम डिस्कशन में ले लेते हैं बिकॉज द टाइम इज शॉर्ट। इसमें प्रत्येक डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना पड़ेगा इसमें अलग अलग बोला हुआ है कि इनकम में क्या देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या देना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बोली हुई हैं। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसमें अपने फर्स्ट स्लाइड को ही कंसंट्रेट करते हैं कि आपको ये 10 टाइप के जो है 1 to लेकर 10 जो है वो डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट आपको रखने पड़ेंगे। एंड इस डॉक्यूमेंट में बहुत ही क्लमजी वे में उन्होंने कहा है कि कैसे क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है।
मैंने प्रेजेंटेशन तो बनाया था उसका प्रत्येक के लिए कि कैसे कैसे आपको रखना है, लेकिन ये जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना वहाँ पर, तब तक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। कंसेप्चुअली आपको 10 डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, in audit also, because in the audit report and maybe Chandra will take, the auditor has to mention कि डॉक्यूमेंट सब रखे हैं कि नहीं रखे हैं, एंड आपको स्पेसिफाइड पर्सन की डिटेल्स यहीं से रजिस्टर से मिल जाएगी। आपने पेमेंट तो स्पेसिफाइड पर्सन किया है कि नहीं किया है वो आपको यहीं से मिल जाएगी, उस रजिस्टर से आपको रेफर करके बोलना पड़ेगा। पूरा चेंज हो गया। हाँ, एक मिनट। हाँ रीमा जी बोलिए। वही तो बात है, आपके बैंक अकाउंट कॉमन है, आपके ऑल लोकेशन का खर्चा वहीं पर हो रहा है, आपके लोन भी वहीं पर आ रहे हैं, कॉर्पोरेट भी वहीं पर आ रहे हैं, उसे इन्वेस्टमेंट भी वहीं से कर रहे हैं। तो ओनली थ्रू अकाउंटिंग स्ट्रक्चर यू कैन डिफाइन, ओनली थ्रू अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, अपने यदि क्लाइंट के लेवल की बात करें, एज ए प्रोफेशनल बात करें, ये अपने तो रिट्रीव कर ही नहीं सकते हैं। यदि उनका अकाउंटिंग स्ट्रक्चर ठीक से नहीं है ना, तो आप इसको इन्फॉर्मेशन को, डाटा को रिट्रीव कर ही नहीं सकते हैं। एंड दिस वाज नॉट हैविंग ए मटेरियल इंपैक्ट ऑन यू बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू सर्टिफाई दिस, बट नाउ 10B फॉर्म में आपको सर्टिफाई भी करना है। तो इसलिए अभी तो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। देखिए वो तो तरीका ही है मानने का, ठीक है, वो तो तरीका ही है, लेकिन आप 10B फॉर्म देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो इस साल एप्लीकेशन हुआ है वो इस साल के लोन से या प्रीवियस के लोन से भी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बेसिकली दे वांट अकाउंटिंग, नहीं निकाल पाएगा। देखिए एनजीओ अकाउंटिंग के लिए कोई कोर्स था भी नहीं, न CA इंस्टीट्यूट का कोर्स एनजीओ अकाउंटिंग के लिए फ्रेम हुआ है, ठीक है। और एनजीओ में जो आदमी काम करते हैं उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती है, वो सब बीकॉम वाले रहते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्ट्रक्चर वो एनजीओ कर पाएगी, आई हैव डाउट, नहीं कर पाएगी। माइक में बोलिएगा प्लीज। एनजीओ जो मिनट बुक मेंटेन कर रहा है वो भी अदर डॉक्यूमेंट्स में आएगा? इसमें तो नहीं लग रहा है, इनके स्पेशल डॉक्यूमेंट में नहीं है, जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया है हाँ। उसमें नहीं आ रहा है वो। अच्छा, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन डिप्रिशिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है। सपोज करिए कि एक केस बता रहा हूँ आपको। मुझे कॉर्पस डोनेशन के रूप में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक बिल्डिंग मिली, ठीक है। तो पहले तो डिप्रिशिएशन वगैरह भी अलाउड होते थे, लेकिन अभी करंट जो हुए हैं फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं, उसके बाद से जो होता है कैश बेसिस पे जो खर्चे होते हैं उन्हीं को जो होता है अलाउंस मिलता है। तो इन शॉर्ट डिप्रिशिएशन को जो होता है ये नहीं मिलता है, अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जा सकता, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं अब अपने फिक्स एसेट्स के ऊपर डिप्रिशिएशन चार्ज ना करूं तो क्या ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है सर, नंबर 1। और नंबर 2 सर कि मेरा पॉइंट ये भी था, चूँकि अब नए ITR 7 में हम लोगों को कॉर्पस डोनेशन और उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं वो दिखलाना पड़ता है। तो अब मेरे केस का अगर बात किया जाए तो कॉर्पस डोनेशन के रूप में सपोज करिए 3 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग मिली, ठीक है। अब मैं हर साल अगर उसको जो होता है बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिशिएशन चार्ज करता जाऊँ 10% के रेट से, तो वो तो कम होती चली जाएगी। तो इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि उस पे डिप्रिशिएशन ना चार्ज किया जाए, क्योंकि कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा है मुझे। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या फिर मुझे मैंडेटरीली डिप्रिशिएशन चार्ज करता होगा? मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली अकाउंटिंग कंसेप्ट में देयर आर 2 टाइप ऑफ रिपोर्ट, जनरल पर्पस रिपोर्ट एंड स्पेशल पर्पस रिपोर्ट, ठीक है। होता क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल पर्पस रिपोर्ट, 10B की रिपोर्ट स्पेशल पर्पस रिपोर्ट ओनली फॉर इनकम टैक्स है, ठीक है। बट वी आर रेफरिंग टू अ जनरल पर्पस रिपोर्ट जहाँ पर डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है। We are not making a separate financial report for special purpose report, and that's why this confusion arises. हम लोगों ने इंस्टीट्यूट को बहुत बार रिकमेंड किया था, जिस टाइम मैं NPO कमेटी में था वहाँ भी रिकमेंड किया था कि जब 10B की रिपोर्ट आप बना रहे हैं तो 10B के हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। यदि आप जनरल पर्पस रिपोर्ट को रेफर करेंगे तो जो आपने कहा उस टाइप की कन्फ्यूजन बहुत आएंगी, जी सर, ठीक है। जहाँ डिप्रिसिएशन का सवाल है, डिप्रिसिएशन
14-15 से या 15-16 से depreciation was not a part of application only on those cases where acquisition was already claimed as an application. यदि आपने एक्विजिशन को एप्लीकेशन पूरा क्लेम कर लिया है तो उसका अलग से फिर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे तो डबल डिडक्शन हो जाएगा। और अब तो सर डेप्रिसिएशन को कंप्लीटली एक ना अभी नहीं किया, वही उसी पॉइंट में आ रहा था। तो आपके केस में ये पकड़ो कि आपने एक्विजिशन को कैपिटल कॉस्ट को एप्लीकेशन नहीं माना था एंड यू आर चार्जिंग ओनली डेप्रिसिएशन एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, उस केस में कैश बेसिस से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। आपने तो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं एसेट का, तो आपको पेमेंट बेसिस में ये मतलब नहीं है कि आपने जो पहले पेमेंट कर दिया है और आप डेप्रिसिएशन के रूप में उसको चार्ज कर रहे हैं एप्लीकेशन में, वो कैश पेमेंट में रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन आप डबल पेमेंट के हिसाब से आपका रेस्ट्रिक्शन है, आपने एक्विजिशन पहले क्लेम कर रखे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन दोबारा बाद नहीं मिलेगा। सर वो तो कॉर्पस डोनेशन के रूप में मिला था तो उसको एप्लीकेशन तो माना ये फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा कि आपने उस टाइप का रिटर्न कैसे फाइल किया था नहीं किया था, ठीक है। तो लेकिन यदि आपका डेप्रिसिएशन लेने की एलिजिबिलिटी है इवन आफ्टर द अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 14, तो आप ले सकते हैं, पेमेंट बेसिस वाला में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी भी मैं डेप्रिसिएशन ले सकते हैं यदि आपकी एलिजिबिलिटी रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है, तो पेमेंट बेसिस से आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रहा है कि ऑलरेडी यू आर चार्जिंग फॉर अ डेप्रिसिएशन फॉर द विच यू हैव ऑलरेडी मेड पेमेंट। यदि एसेट का पेमेंट नहीं करते तब आपका दिक्कत आता है। और यदि सर अगर मैं डेप्रिसिएशन को कंप्लीटली ऑफ ही कर देता हूं बुक्स में, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में स्पेशल पर्पस रिपोर्ट में वी डोंट एडवाइज एनजीओ टू चार्ज डेप्रिसिएशन। एफसीआरए में हम लोग नहीं बोलते हैं चार्ज करने के लिए, सब कैश बेसिस अकाउंटिंग चल रही है वहाँ पर। तो वो लेकिन जनरल पर्पस रिपोर्ट में यस ट्रू एंड फेयर व्यू इंस्टीट्यूट के हिसाब से आएगा नहीं। इंस्टीट्यूट भी बोल रही है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब लगेंगे, जब आपकी कमर्शियल टाइप की एक्टिविटी थोड़ी सी होगी। यदि आपका 11(4)A का बिजनेस है या 11(4) का है तब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एनजीओ को अगर सेक्शन 8 कंपनी नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर। Yeah. If you are maintaining your books of account and these documents at a place other than register office or including the register office, then you have to give a letter to the assisting officer that look, my books of account and other documents are maintained at such and such places. This is register office, this is head office, this is my working location, and that letter must go to the assistant officer together with a board resolution and duly signed by the person who is eligible to sign the ITR. But what if it has not been done? Till date, no penal clauses. That's why we are advising to file that. Because otherwise 10BB we have to qualify. फॉर्म नहीं है, सिंपल लेटर बोला है उन्होंने, ऑनलाइन नहीं है, थ्रू लेटर ईमेल भेजिए असिस्टिंग ऑफिसर को, कोई ऑनलाइन टाइप नहीं है इसका। सर in view of this new Supreme Court judgment in the new Noble Education judgments बाद में हाँ, इसका I am talking with 11(4) also, like I am having an institution, a school is there, and we are having a hostel facility also, and bus services are also being rendered. There the word solely has been used. So whether this thing will come under section 11(4) and I have to maintain a separate accounts for my bus and hostel facility. यदि आपका नोबल के जजमेंट से इंसिडेंटल बिजनेस वो इनकम आ रही है तो आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ेंगे। अब कौन सा इंसिडेंटल होगा नहीं होगा उसके रेस्ट्रिक्शन बहुत कर दिया उन्होंने, एंड रमेश भैया आएंगे मैंने उसमें वो लोग डील करेंगे, लेकिन यदि इंसिडेंटल है तो आपको सेपरेट बुक्स रखनी पड़ेगी। देखिए वी आर डिविएटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपको देखना पड़ेगा जो यूज में प्रॉपर्टी जा रही है उस यूज का ऑब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में है कि नहीं है। यदि आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इंटरचैरिटी डोनेशन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अपने जो दे देते हैं चेक काट करके, और उनका रिसिपिएंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स दूसरे हैं और आपके ऑब्जेक्ट्स में दूसरे हैं, तो आपका अभी स्पेसिफिक वायलेशन में भी आ गया है। आपको ऑडिटर को भी 10BB में बोल रहे हैं कि सिमिलर ऑब्जेक्ट दोनों का नहीं है। तो वी हैव टू वेरी वेरी पर्टिकुलर ऑन दिस टाइप ऑफ यूजेस बाय अनदर इंस्टीट्यूशन ऑफ योर प्रॉपर्टी और इंटरचैरिटी डोनेशन। या उसको रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन दीजिए, पर्पस बोल दीजिए हम एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, हम इस बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं। आप खाली चेक काट के मत दीजिए, चेक काट के देंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। टोटल इसीलिए आप पर्पस बोल दीजिए लेटर में। फॉरेन लेटर में आप आईटीओ को मौका ही मत दीजिए। आप हम बोल रहे हैं, फिर हमने स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एनजीओ सेक्टर में आई एम कंजर्वेटिव, आई एम नॉट एग्रेसिव। हम कोई भी व्यू एग्रेसिव का नहीं लेंगे।
कारण कि प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। आप इंटर चैरिटी डोनेशन का लेटर में आप पर्पस लिख दीजिए, एंड वो पर्पस आपके ऑब्जेक्ट में होंगे, उनके ऑब्जेक्ट में होंगे। सुरेश सर, आपको आना पड़ेगा बिकॉज देयर आर टू अदर स्पीकर्स हु आर आल्सो देयर, एंड आपकी जो दो टॉपिक थी सर, दैट registration of the trust, renewal of the trust, and the donation to other trusts, and maintenance of books of accounts. तो उसके अंदर में सर ने जितना अच्छा से सब चीज़ क्लैरिफाई किया है, तो आई थिंक इफ ऑल द अदर स्पीकर्स हैव स्पोकन वी विल हैव मोर टाइम विथ हिम, आई थिंक. Friends, very nicely deliberated by Suresh Kejriwal, the first part of our today's deliberation. A good number of questions interacting was very also innovative and mind-blowing, and it certainly has increased my level of knowledge, and I hope for all of you too. And a big round of applause for Suresh Kejriwal for such a nice discussion. Now it's a time to express our gratitude to the speakers. May I now request Sri R.S. Kyalji to please come forward and offer a flower bouquet to our chairman, Sri K.K. Chhapadia ji. May I request C.A. Pawanji Tirudewal to please come forward and offer a flower bouquet to C.A. Suresh Kejriwal. May I request C.A. Sanjay Jain, Deputy Convener of Central Kolkata CA Study Circle, to please come forward and offer a flower bouquet to our second speaker, C.A. Sanjay Bhattacharya sir. Friends, may I request C.A. Anup Sangai to please offer the memento to our first speaker, C.A. Suresh Kejriwal. I request C.A. Surbhi to please come on the dais and introduce our next speaker, C.A. Sanjay Bhattacharya sir. Good afternoon, everyone. Well, thank you, Hari Ramji, for giving me this opportunity to introduce Sanjay sir, who needs no introduction though. As conferred upon me, I like to introduce Sanjay sir. He is a qualified chartered accountant and has been in practice for past 44 years. And he is a BSc honors in chemistry. He is also a lawyer and an FCA. He is a partner in the firm Sukumar Bhattacharya & Co. I now request Sanjay sir to please come and address us. Thank you, sir. May I request Ramesh Ji Patodia sir to kindly join us on the dais with huge round of applause from all of you. May I request Surbhi to kindly join us on the dais. Yes. With these, may I request Sanjay sir. Good afternoon. My thanks to both Central Kolkata CA Study Circle and Views Exchange for giving me an opportunity of sharing my thoughts as regards charitable organizations. We have heard Mr. Suresh Kejriwal. He has explained in a beautiful way those related provisions of formation and registration, and thereafter also the requirements of the accounts. I am to deal with the
forms. That is audit forms 10B, 10BB, and if time permits, then ITR 7. I think I have got about an hour, so I shall try to finish my deliberations within that. There may be some views that I may express which may not be agreeable by all present here. But still, whenever I think so, then I will tell that. Very first thing that I want to say is this maintenance of accounts. Now this, from August 22, this Rule 17A and also Rule 16CC have come. 16CC is for the organizations which are approved under Section 1023C, particularly 1023C subclauses 4, 5, 6 and 6A, not others. And 17A is for all the organizations, all charitable and religious organizations which are registered under Section 12A, read with 12AB. Friends, those two particular rules, 16CC and Rule 17A, have asked for maintenance of accounts. Does it mean that we have to maintain separately accounts? This is the question that came to my mind also when those two rules were inserted. Think of a company which is a Section 8 company. Is it not mandatorily required to maintain its accounts? Think of a society registered under Societies Registration Act. Is it not mandatorily required? Does it mean that for income tax purposes I shall have to maintain a separate account? It can never be. The only requirement will be this, that whatever are required there in 16CC and 17A, those must be present in the system of account that I am going to maintain. As Mr. Kejriwal told, what are the books of account? Cash book, ledger, journal, which are very normal to us. But several other records are to be maintained, like corpus donation, then utilization from loans. Those are all specified. Now, what we'll have to do? We'll have to see that those are duly complied with. It is not that we have to maintain a separate cash book, separate ledger book. That is a requirement that is under some other law, FCRA. There is no going away from it. This Foreign Contribution Regulations Act requires us that we must maintain separate accounts. That has not been changed. That cannot be changed otherwise than by changing that law. That requirement is still there. But the requirement that now we are discussing, this Rule 16CC 17A, according to me, no separate requirement is there for maintenance of separate books of accounts. It is only those particular things which are mentioned in those rules, those must be available from the record that we are going to maintain. That is the requirement, according to me. Now coming to Form 10B, 10BB. Now, from 1st of April 2023, this 1st April 2023 is a date. It is not the commencement of the assessment year. Date. That has been told that by changing the law rules for which prescribe this Form 10B or 10BB, those have been changed. Now there are the earlier concept, if you remember, 10B had been for the organizations registered under Section 12A. 10BB was for the concerns which were approved under Section 1023C. This concept is gone now. Now what is the present concept? I think Mr. Kejriwal touched it. Oh no, sorry. Then let me tell it. The present concept is this, that means with effect from 1st of April 23, whenever a chartered accountant is going to issue an audit report for any organization, whether approved under 1023C or registered under Section 12A, they have to see which form is to be used. There are two categories. First category, if the total income of that organization, be it approved under 1023C or registered under 12A, if its gross income, total income, mind it,
The word I am using, total income, I am not telling gross receipts. Total income has got a separate definition in the Income Tax Act. If the total income of that organization, without considering sections 11, 12 or 10, 23C provisions, exceeds rupees 5 crore in a year, or if that organization has received a single rupee also from foreign sources, and number 3, if that organization has applied its income outside India. These 3 criteria, if any of them is present, then the audit report will be in form number 10B. All others form number 10BB. So the earlier concept that 10B for 12A and 10BB for 1023C is no more. It is both forms can be utilized for a same organization, but year to year it may change. Maybe in this year it will be 10B, next year it will be 10BB or vice versa. So these things have to be kept in mind. Now if one goes through 10B, then he or she will understand what are there in 10BB. But 10BB is much, much, much shorter than 10B. I have counted the pages. From the government gazette. While 10B is 17 pages, including the notes, 10BB is 5 pages. So you can understand. Whatever are there in 10BB, you will find in 10B. So I am discussing on the basis of the particular 49 items that are appearing in 10B. Not that all are required to be 10, but I will go through that, because I think that once a person can fill up from 10BB, filling up the return from ITR 7 will be nothing for him. Now you see, earlier what used to be done, when we used to prepare ITR 10B or even ITR 7, we had to do the computation first. Without doing the computation, no chartered accountant could have done 10B. If it would have been done, that would have been wrong. Because in 10B, if you remember, we had to write what are the amount of applications. So how can you know what are the amount of application? In 10B, one had to write what are the option exercised for utilizing next year's application as this year's application. Without preparing computation, can anyone do it? Then also whether there is any accumulation made under 11.2, that is also not possible. And in case of 1023C, there were, from last year that has been brought at par with Form 12A, registered organizations under 12A. So those are now common. Friends, I have gone through this Form 10B. Maybe most of you who are present here have gone through it. The very first time when I went through it, what were my reactions, I must share you before I go into this. The first reaction was this, that this is 5 times than the tax audit report. Not more, it may be more than 5 times. Number 2, the fees that we can expect, maybe 0.1% of the fee that we can charge of tax audit reports. These 2 things hit me in my mind. Now I am coming to Form 10B. Friends, there are 49 items. I am mentioning those items by name, not discussing everyone, but mentioning. Yes, 49. One is PAN, no need to discuss. Number 2 is name of auditee, no need to discuss. Number 3, assessment year. Number 4, previous year. Now comes number 5. Now, that form is there. First let us consider the audit report itself. Please, there is a very big difference with the earlier one. The earlier one, if you remember, it was only that once we had to write that whether the income and expenditure account and the balance sheet, they have been prepared in correct way, were in agreement with the books,
and whether there is any qualifications about the accounts that have been made, and lastly, the prescribed particulars are attached, enclosed. That was the only thing regarding that annexure. The annexure is the main thing, like our tax audit report 3CD is the main thing. You know that in Form 10B, annexure is the main thing. There was only one line that particulars are, prescribed particulars are enclosed or true, something like that. But now if you see, now here, it is no more accounts true and fair, but the details given in annexure are not true and fair. It is true and correct. The way, if you remember, in our tax audit report, it was changed. There is a great difference between fair and correct. You can understand. Correct means I am telling it is factually correct. Everything I have verified. Yes, I am certifying that. So keep that in mind. Now coming to this form, again I will say, before one chartered accountant touches this 10B for filling it on, he or she must do the computation first. Why? Because when one person will go to make the computation, then he or she has to understand what are the relevant provisions. There are lots of provisions which have to be considered. It is not that whatever is shown in the income and expenditure account, that will be the income and that will be the expenditure. There are lots of other things that have to be considered. Plus, another point also, which I should have told at the first, that if you are aware that from this financial year, that is 22-23, that is assessment year 23-24, though income may be your accrual basis or income may be on cash basis, your payments, that is in the applications, can be claimed only on cash basis, which Sureshji also mentioned. Now there may be a case in case of a company that income is being shown on accrual basis. Naturally in the account the expenses also will be in accrual basis, but when you will do the computation there you have to add back those provisions and claim the actual expenditure. If other than a company also there may be certain organizations which are maintaining their accounts on accrual basis, there also this calculation has to be done, but there is no requirement for maintaining a separate account for that. You tell me, for 43B, do we maintain a separate accounts for for the businesses? Depreciation, we claim differently. Do we maintain a separate accounts? There is no requirement of any separate accounts. The only thing is that the recording should be made of it. Like as Sureshji has explained, that certain monies have been utilized, applied out of the corpus fund, or certain monies had been utilized out of the borrowed funds. Then there was no application, but when those are repaid or redeposited, then there is application. How can we find out from your accounts? It cannot be. Nobody can understand. So records have to be maintained, and those records have to be maintained as per this inserted Rule 16cc and 17A. These are specifically mentioned that these records must be mentioned, and unless those records are maintained, no person can fill in Form 10B. So if I prepare a computation on the basis of the relevant provisions, after understanding that thing, once the computation is made, then it will be much easier. I'm not telling easier, much easier comparing to the position. Otherwise, it would have been that where and what I should fill in this Form 10B. Now coming to this number 5 item, registered address of the auditee. Mind it, registered address. They are not telling head office. That's what from we will get it. If it's a company, there is no problem. If it is a society, there is no problem also. That must be available in the records. And for any trust, whatever address we have, that particular organization has used for its last return, we should take it. Number 6. Friends, this is very important. Sureshji already touched upon that thing. 6 is other addresses is applicable. What is other address? An organization may have got more than one office. Big
organization, they may have got offices all over India. If books of accounts which are being prescribed in Rule 17A or 16C are not kept in the, all are not kept in the registered office, but some of them are kept in those offices, then the new rule, the law says, that is effective from August 22, that the governing body or executive committee or the trustees, whoever are the governing that organization, have to take a resolution in a meeting that henceforth these accounts, books and details will be kept at that particular office, and within 7 days from taking that decision, the jurisdictional assessing officer has to be intimated about it. So when we say here other addresses is applicable, you have to keep in that mind. It is not the list we will give. If I remember correctly, in our tax audit report where we write the location, there is no requirement that we have to write that what was the resolution taken for this. If I remember correctly, it is not there. Here it is. Here it is. Then 7 is type of auditee, that is whether trust or society or company or others. I don't know what can be others. Number 8, whether the auditee is established under an instrument. Naturally, there cannot be a charitable trust which is on vocal trust. It has to be. Either a trust deed will be there or a registered society's memorandum or company. Then number 9, details of registration, provisional registration. I am not going into the details. They have asked in the columnar way whether which date this provisional registration or registration has been given, as Sureshji has clarified from the new law, that if certain organization has been given provisional registration, but it has commenced its activities, then there is a requirement that they are to file from 10AB, I think, isn't it? 10AB within 6 months from the date of commencement or 6 months prior to the expiry of that provisional registration. So those details have to be given. Now number 10. You see, this also, please note this. I am reading it out. It will be very difficult to read from there. Number 10. 10A. Details, please hear carefully. Details of all the authors, founders, settlers, trustees, members of society, members of governing council, directors, shareholders holding 5% more or shareholding, office bearers of the auditee at any time during the previous year. Now please see, if you remember, in our form 10B earlier there was no requirement for this. But in the ITR there was a requirement. But there is a difference between these two. If you remember, in that ITR 7 where these were required, there it was written, authors if they are alive. So there is a difference. Here it is asked whether those particular persons are in existence or not. You have to give their names. Yes, they were authors during this previous year also. They were the settler during this previous year also. Nowhere written that they are alive. If they are even dead, I have to mention. Then, with percentage, this is something fallacy for me, because how a charitable organization can have shareholdings, it has not come to my mind. Because shareholding things come only for a company. Usually Section 8 companies, those are by guarantees. Can there be any shareholders? Then how? Huh? And can there be shareholders? Okay, when Sureshji is telling that thing, I also believe that otherwise they would not have written. That means if there would be shareholders, then more than 5% shareholders' names you have to write. And then that company law requirement, they have also written that if that one of the shareholders is a company, then you have to give the name of this beneficial interest holder. I don't think how far they can go for these things. I am not going in that details. Number 11, objects of the auditee. They have given the objects
in the notes they have given, you know, you have to write the religious, education, and all these things. There are 11 items. That code you have to give. Then, number 12. This is very occasional, I am sure, that if, I think Surajji also mentioned about it, if there is a change in the objects, if there is a modification in the objects, you know, from earlier years, there has already been a requirement that if any charitable organizations wants to makes any change in its objects, then within 30 days it has to apply for a fresh registration. That details they have asked. It is a very rare thing, so I am not going into that details. It will be better that if I finish, otherwise, you know, I cannot continue. Yes. Question we will take at the last. When he finishes, then so please write down the question. Only you have to keep it in your memory. Or in the mobile, in the WhatsApp, you can write. Because if I start answering, there will be another question, then I will lose. Number 13. It is here they are asking whether it is a provisionally registered, and you have to give the details when the activities have been commenced. You know, for any audit report, we have to depend upon the auditee, no doubt about it. But here there are some cases similar to our tax audit report. We must take it in writing. We must take it in writing. Because we have to save our skin also. Then number 14. Here the question is, you see, whether the books of account and other documents have been kept and maintained in the form and manner and at such place as prescribed under Rule 17AA by the auditee, which Surajji has already discussed. You know what type of books of accounts have to be maintained and what are the other records. Here we have to write only yes or no. Thereafter, in this 14, there is a number 2, Roman 2, if you see. There these location-wise details have to be given. Then comes 15, whether any project or institution is run. And then in that 15F, this 15 is specifically for whether there is any GPU, General Public Utility Object. That had been there in our ITR 7 earlier. That has been copied here. But here what they have written, that if there be any general, objects, other objects of general public utility, that I am calling GPU, and I am sure that when Ramesh will be talking afterwards on those two particular Supreme Court cases, there we will understand much more what we mean by GPU. I am not going into that details. Only thing is that the definition of charitable purpose as given in section 2, clause 15, and its two provisos, those we have to keep in your mind. On that basis, only this number 15 has to be answered. That if there is any GPU, whether there is any business, trade or commerce, or there is a rendering of service, and the percentage of it on the total receipts. You know why? Because section 215 says that if those type of activities are there and the gross receipts from that is more than 20% of the total receipts of the organization, then it is not charitable purpose and that organization loses the registration. So here this is very important, this 15. Before answering, one must be sure that what it is writing. On the basis of the reporting that to be made here, that organization may lose the registration. So number 15, one must be very careful. 15 and 16 both. Then in 17 and 18, the questions are asked whether any business is run. Here I give my personal views. Sureshji, what I am telling, whether you agree or not. According to me, running of a school and running of a hospital are also businesses. But how many cases you have found that they have written that as businesses? This is my first thing. Here, if that organization is running a school or a hospital, then we must write that it is being run. Because that must be one of the objects of them. Otherwise, they won't do it. So, take care in that. And number 2, though it is not today's subject, but I am just bringing to your kind attention. If you remember our ICAI guidelines for tax audit,
It was specifically written, even if the income is exempt, still tax audit is required. So keep that also in mind. Both the things have to be kept in mind, because we cannot forget for the timing that here we will show that as business turnover more than 2 crores of rupees, and there we will say that it is not required, tax audit required. That type of things should not happen. Then number 19. Now this we may find in most of the cases. They have referred 4 TDS sections, 4 particular TDS sections. One is 194C, contracts. One is 194J, professional or technical fees. 194H, commission. And 194Q. I can understand 194C, 194J, 194H. Because in many organizations we find that income, in form number 26AS, it is coming like that. But 194Q, if you remember 194Q, what it is, or should I tell by 1 minute? 194Q is there when a person purchases from another person more than 50 lakh of rupees worth thing, and the person who is purchasing has got a 10 crore turnover, then a tax has to be deducted at 0.1%. How many organizations we will find in India who will have more than 50 lakh of rupees purchases from others? Purchase 50 lakh of rupees sales to others. Mind it, it is 50. Let me clarify. A is the organization, charitable organization. B purchases from A. And when B purchases from A and the total value of purchases is more than 50 lakh, then B deducts tax under 194Q. How many A will be there in India? According to me, there may not be anyone. Because charitable organizations carrying on business having more than 50 lakh, okay, it can be only if it is a school, but school is not selling anything, hospital is not selling anything. This may. So that's why I am not telling there is nil, there may be, but there are only very few. So these are to be specified here, those details. Then number 20, this is also very important. This please note down. This number 20 is, the question is whether provisions of 22nd provision to clause 23C of section 10 or subsection 10 of 13 are applicable. Here let me ask you one question. I am sure that every tax practitioner has got an Income Tax Act, that book, where it was lying here somewhere. It is no, I don't want that. Where you will find the 1023C, do you every time write down this is first provision, second provision, third provision, fourth provision? No. Please do that. Otherwise you will not trace out which is 10th provision, 22nd provision. So whenever you purchase that book, please note down. Write down this is first, second, third, carefully, very carefully, because there are provisions under provisions also. No, I am telling from my practical experience. I am not telling from hearing from others. I have done. Whenever I purchase, at least in 1023C I write. Now I think the last item is 22nd. So you have to keep in your mind that there are 22nd, then you have to see which is 19th, which is 20th and all these things. Because here what they are asking, that is in a specific, it is 22nd provision. Usually, whenever we used to deal with 1023C matter, the most important was the third provision. Most important was. Why? Because the third provision of section 1023C was, which was as regard the applications made, accumulations made, all these things. Now all the provisions have become important. Now here the questions are this, that 1023C or section 1310 are applicable. If you go through the books, you will find there some specific violations are being written. So those have to be very carefully studied. Then number 21. This also, if I remember, Sureshji has told, this is regarding form number 10BD. You know, this after 32 days, that is the last date.
by 31st of May of 2023, every organization which is approved under Section 80G has to file and upload a form, 10BD, and also upload another form, 10B. It is not uploading, it is to be issued to the donors. Now, if 10BD have been issued, that means all donations received, then this 21, 22, and 23, all are to be written. Here the specific requirement is this. Let me tell you, when this 10BD came, questions arose that if we don't know the details of the donors, what to do? Because 10BD could not be filled in without knowing the name, address, and PAN. Purpose also, yes. Purpose you can write down always the general running of the organization. But most of the organizations I have come to know, they told, sir, if we don't know, for religious organization there is no problem, but there is no 80G for religious organization. 80G is only for charitable organization. Now if you have received some money and you have not got the details, you know that will be anonymous donation. Then there will be application of section 115 BBC. If more than 1 lakh of rupees are received, then you have to pay tax at 30%. There is a specific rate, 30%. Now here, if you don't have the details, how could you fill in 10BD? You could not. So that becomes also anonymous donation. If you don't have any 80G, you don't have to file 10BD. Forget about that. Now, this is one point why I am telling here, when the auditor will write this thing, he should be careful, because whatever money amount will be shown here as without details, that will go in anonymous donation. And so the taxability, if that amount exceeds rupees 1 lakh, has to come. Then number 24 is the voluntary contribution received. You know, the upperwards, whatever voluntary contributions have been received, that total will come here. Then foreign contributions, you have to take that from, it was in our earlier return also, not in 10B. You have to take it from where? Maji, you are telling yes. Where? You are going to fill up this form within 30th September. And FCRA return is required to be filed by 31st of December. How will you have that return? You can't. Then you can have only from their books of account, or that quarterly statement of the donations received, that you have to ask for. You can't check the return of FCRA, because this year's FCRA return will not be available. So keep that in mind. Don't check from the last year. So please keep that in mind. We have to ask, if it is FCRA registered organization, that supply us that what are the foreign contributions. The total amount will be sufficient, not donor-wise payment is not required. Then this number 26, which is always of discussion, that is the corpus donation. Now the corpus donation, there are two classes they have mentioned in that corpus. The first one is, that 80G2B, that means churches, mosques, temples, for which certain donations have come. Mind it, it is 80G2B, though that is a religious organization. That's a special, heritage type of organization. I know about St. Paul's Cathedral. It must be for other, some big temples and all these things. And the second one, that B, is all others. Then number 27 is voluntary contribution required to be applied. All this total and this minus of the corpus donation, these figures will automatically come. That's why I am telling that if you make the computation first, you will see that those are reflected there or not. Then another point comes under this thing. This 28 is income other than voluntary contribution received from property held under trust referred to in section 11, or income of fund, institution or trust, any university, and so and so, other. There may be some other income, interest, rent, and all these things, that total you have to give. Like, in the ITR 7 that we used to file, there, that ITR 7, all the incomes are to be shown in AI schedule. No question of showing it under any head of income.
So whatever are there AI schedule amount that should come, that we have to write here. Then number 29, if that organization has spent money outside that, and if also that has been sanctioned by the government, you know that normally all the monies that have been spent, which according to the income tax language applied in India, are eligible for exemption. But outside India also, if it is for international something as there, and also they approved by government, it is under section 11(1)(c), then that amount has to be written here. Then comes item number 31. If you have made the computation correctly, then 31 filling up is not difficult. Because 31 is nothing but the computation. You write there what are the application, out of that what application TDS has not been done, so it will be not allowed. Out of that, whether there is any payment excess, exceeding rupees 10,000, all these things are there. These are, whoever has prepared this thing, he is very intelligent, no doubt about it. But he has got no common sense, that also I can. Why? Because he has forgotten whom they are asking for these things. It is more than ITR. In ITR, you don't have to write all these things. In the current form also, you won't have to. But that's why I'm telling you, if 10B is done, and if the auditor should ask for 5 times tax audit fee, but that is not possible. So, it is a charity by the chartered accountants. Now comes, now you see in 31, they have made it very beautifully. I must praise whatever is praiseworthy. It is written there, how much amount has been actually paid, how much amount is provided, and how much amount out of the provision made earlier year has been paid during this year. All these are there. So it will automatically come out, provided you have done the computation correctly and kept it in front of you. Then in that 31 itself, in the below portion, there is amount to be disallowed on application. There they have mentioned wherever these disallowance are to be made, or specifically they have mentioned it. So this, without this section, you cannot proceed. Totally, ultimately at item number 32, you will arrive at the taxable income. So I would suggest, when you make the computation, please take an extract of this item number 31 and do it simultaneously. That will help your work. Then comes 33, items number 115 BBI. Sureshji, one question was asked by Rajaram Babu. If I remember correctly, I don't know whether you could answer it or you have answered it. He asked, if there be maximum marginal rate, what about the surcharge? Rajaram Babu, here they have not asked for maximum marginal rate. They have told 30%. So question of your that 37% applicability is not there. No, I have not told that. No. No, I am telling you, because you see, I am taking 2 minutes for that. When there is a question of maximum marginal rate, an income tax department invariably charges surcharge at 37%. I have seen that. I had a doubt why they are doing it. Then I went to the definition in the Income Tax Act about maximum marginal rate. And there it is written including surcharge. So wherever they will apply maximum marginal rate, automatically that 37% now, which is 25%, will come. But not here. Here they have told you specifically the tax rate will be 30%. So naturally, on the basis of the total income of that organization, the surcharge will come. No, I am telling question of 37% will not come here. No, otherwise I won't go, then it will be diversion. I just wanted to say, where there are MMR is mentioned, there only the question of 37% can come. But where the rate of 30%, like in anonymous donation, it is written 30%. So it is 30%.
plus naturally it will be 30%, then your total tax will be counted. Thereafter this surcharge, education says everything will come. But not automatically that 37% will come, because AMMR has not been used here. Then at 34, that anonymous donation which we have already given in the details, where we have given the 10 BD, that will have to be mentioned. So this cross-tallying will be done. In my view, when you will fill in, you will find that whatever will be written there, it will come automatically here. This is my view. I am not, this is my experience from others. From the returns we have seen that wherever we are putting, if the same thing is asked at some places, it will come out. 20 minutes hai to hamara. Then comes 35, other incomes. Mind it, this other income, don't think that other income in the normal way. These other incomes are only on the basis of violations. Now you may ask me, why are you telling it? Let me read out. Whether the auditee has any income chargeable under 12.2 and the amount of such income. 12.2 is only for violation. Income as per explanation 3B2 subsection 1 of section 11 in case of violation of clause A or B or C or D of explanation 3A2 subsection 1 or section 11 read with clause B of section. This is violation. These are not the normal income. Income as per explanation 1B to third provision to clause 23C in case of violation of clause A, B or C or D or third provision 10C section 10 read with clause B of 2 of section 80G. This is 80G. Why they are written? Because of those heritage temple and churches that I have told, where this 80G is given, a special 80G is given. If certain person has given, maybe Sureshji has discussed it, I am just for the sake of this particular clause I am telling, if certain corpus, certain donations are received for the renovation or repairs of those approved, notified temple or church, and that organization being eligible to consider that as corpus, but don't use it as corpus, but utilize for some other thing, then that becomes their income. So these are all violations. These other income, don't think these are normal incomes. Then income chargeable under subsection 4 of section 11, that is the business income, if there be any, that thing. Then number 36, details of capital asset transferred and subsection 1A of section 11. You know that 11.1A, it is for capital asset, and if you acquire another capital asset, then that will be considered as application. Then number 37. Now you see, these 37 are these also for violations. Like, accumulations made under section 11.2, but you have not utilized it within the period of 5 years, or you have not, you didn't keep it in the investment that you were asked for. Then also under 1023C also those things are there. Then also, these are not always violations, these are which will not be considered as your application of income. Like earlier years, every year I am allowed to accumulate 15%. So I have got accumulated incomes. Now if this year I have utilized some of them, naturally I will not be allowed deduction for that. Because application of income can be limited to only the income of the year. There cannot be any doubt about it. So if more than my income I have applied, that means it is either of loan or out of corpus fund or out of earlier years accumulated income. Those are never allowed. In our return also that is there. This they have asked here, that the auditor has to write here. Then number 38. Details of application resulting in payment or credit in excess of 50 lakh, that's a requirement. They are asked that whether any payment more than 50 lakh has been made. Then, this is also very important, this 39. Here, all these parts are only for violation. Here, they have asked that according to the chartered accountant who is auditing this thing, what are the violations? You can understand it. Like, we write in 43B. Like, here you have to write it specifically. But if you, 39, if you have already done the computation, naturally you have taken care of that.
So those figures will be in front of you. Don't ever think of writing, filling in the audit report be fast and then do the computation. It has to be reversed. You must have the computation, then only you will do it. And make that organization understand it. Then 80G, this is number 40 is if 80G 5 approval is there, then those details have to be given. Then 41, details of specified persons, all those prohibited category of persons, those are detailed in section 13.3. You know that any transaction with them or any benefit given to them, that only makes that organization loses its registration or approval. Those details they have asked. Then details of transaction referred to in 13.2. Same thing. You know, actually, Sureshji, this audit report is made so that the chartered accountant says these are the wrong things they have done. Nothing else. I'm telling you, nothing else. Once this report will go, thereafter that organization will get this 143.1A, and there it will be written that variation from your audit report. That we are finding from tax audit report usually. Then number 43 is, they have mentioned it as specified violation. All these are violations only. So unless the chartered accountant who is doing this audit and also preparing the return is well conversant with these provisions of this, I made a list. Let me read out that list. Section 215, charitable purpose. Section 224, 2A, income chargeable in the hands of charitable organization. Section 1023C, subclauses 4, 5, 6, 7A. There are, sorry, I told you 22 provisions. There are 24 provisions. Then 11, exemption of income to the extent income applied. Number 12, income of charitable organization. You know that voluntary donations are, corpus donations are exempt. 12A, conditions for exemption. 12AA, it is no more applicable. 12AB, that is registration which Sureshji has clarified. Number 13, most dangerous section in the Income Tax Act, I think. Non-applicability of section 11. 80G, donations. 115 BBC, anonymous donation. 115 BBI, specified income on violation. 115 TD, TE, 115 EF. That is the death of organization, which Sureshji has told exit tax. And in the Income Tax Act, it is written as accreted income. Then 139, 4A and 4C for returns. 143 is second proviso, that is association, assessing officers making a reference to the commissioner, sir, please cancel the registration. Then rules, 16CC, 17, 17A, 17AA, 17B and 17C. A chartered accountant has to go through all these things. Let me... Sureshji's book is there. Then you see, the question is at 44 whether depreciation has been claimed. You can understand, no more depreciation can be there. Once I have claimed the actual cost, there is no more claiming of depreciation. That they have asked. Then whether other these violations are there, and there are number 3 items also, 269 SS, 269 ST, 269 T. That you know, acceptance of loan, acceptance of any money more than 2 lakh, and repayment of loan. And last one, this is very important. Don't think that last one means nothing. Why they have not reached 50, I don't know. They have completed is 49. But what is that 49? Whether the auditee is required to deduct or collect tax as per the provisions of chapter 17B or chapter 17BB. If yes, fill the scheduled TDS TCS statement. You remember our tax audit report, clause number 34? That has to be repeated. That means all requirements of TDS we have to write by the organization. Number 1.
Number 2, filing of quarterly TDS statements. Number 3, all these things are there. Number 3, payment of interest under section 201A. Then only you will come to the end of this. And friends, once you can understand 50% of it, you will understand 100% of 10BB, no doubt about it. But let me tell you, we are criticizing, I am criticizing it, no doubt about it. But whatever questions are there, without knowing that thing, no organization can file its return. No organization can claim its exemption. That is also there. The only problem with us is this thing. We don't get so much time for this thing, neither we get it fees for it. That's why it is worrying us. Otherwise, this is a very big job. For small organizations, if they are FCRA registered, they will have to go for 10B. If it is not FCRA, because there are some organizations, they get foreign donation because of their friends who are, I know one orphanage. It is not orphanage, it is for the disabled children. You know, some of the children have got some relatives, they are outside. Now they send donation. They had to get themselves as FCRA registered. Now they have to file this 10B only. They cannot go away with 10BB. And you know that FCRA, Sureshji didn't go into details about that. There are so many restrictions. One of the restrictions he told that you cannot transfer it. Here they are telling that one charity organization to another charity organization you will get 85%. There it is 0. You will lose your registration only. No transfer can be made in FCRA. That Sureshji also told. Then there are so many restrictions. You cannot spend more than 20% of your contribution towards your administrative expenses. One organization, if it is registered under FCRA, I think all organizations are in the need of funds. There is no doubt about it. But it is FCRA. The chartered accountant who is doing this audit, naturally the auditor who does the accounts audit, he or she is appointed as the FCRA auditor. They don't put as ever. So all these things you have to see. Without these things, this 10B cannot be done. And when 10B has come, we have to fill it in the correct way possible. And friends, wherever these questions are asked, like authors, who are the trustees, we must take written communication from the concerned auditee. Don't take the risk of reading it and writing it. This is my suggestion to you. Please ask them that you give. Also these registration details, provisional registration, normal registration, the final registration or approval under 80G or FCRA registration, please ask for the copy, see those in your own eyes. And once it is done, I am telling that organization which has been able to get a proper 10B from its auditor will have no difficulty in filling in ITR 7. But much less than these, the details have been asked. Yes. No, I am just telling. Krishna Kumar, I can ask for the questions then. Friends, I think whatever I thought I will put burden on your mind, I have been able to do that. Now, if there be any point specifically in this regards, you may ask, I shall try to answer. Thank you very much. Sanjay Dev, one or two questions from my side first. Yes. You suppose there is a trust which is having a, say, mandir. It is doing a charitable activity as well as it is having some temple also, and there is a donation box there. And in the donation box, there is some donation which is coming in. Obviously, it cannot maintain the details of the person who has given the donation there. So whether those donations, I mean that trust is not a pure religious trust, but it is a trust which is registered as a charitable cum religious trust. So obviously that trust cannot have that donation, the donor details of the donations which are received in the donation box.
I understand your question, and you have yourself told that it is a charitable come religious trust. See, if it is charitable come religious trust, and if you can show that the donation box is only for religious activities, what I suggest that on the box you should write, please donate for religious activities. Then there is no problem. Because it is only for charitable activities. If you have got anonymous donation, then the question of 150 PVC will come. There is no limit. There is no restriction. But 1 minute. you have to show that that is for religious purposes. You can't use that for religious. So you have to make separate account. Sanjay, I have one more question. Now, 1 minute, please. One more question with this. Now that trust is also getting some online donations also. So there in the online donation, the person who is giving the donation, that is not mentioning whether it is for the religious purpose. So what will happen in that scenario? For the sake of the organization, that particular organization must intimate, know who is giving the donation. To write, no, they have to. If they don't, then they will consider this as religious donation. What can I say? It depends upon the organization. If it wants to utilize that money for charitable activities, then they have to pay tax on anonymous donation. If they don't want to pay, then the only way left is that to consider that donation for charitable religious activities only and show it also in the accounts like that. There should be separate accounting for donations for religious actions. Then there is no problem. But one has to keep in mind that if the donation is for religious purposes is say 5 lakh of rupees and charitable purposes 7 lakh of rupees, and I show that 8 lakh I have spent for charitable, that cannot be done. Sir, can we come on clause 10? You want to add something? Let me ask a very silly question. What do you don't mind for what do you mean by NGO? So my party is also a non-government organization. You are telling a charitable organization. I have got allergy to the word NGO, that's why. Only activity of only activity in hospital. Why should you show? You will show the donation. Yes, actually those are business receipts. The moment the business receipt then my license will fall. Now we go to business. See, let me tell you. Section 11(4). Find it. Section 250. This is very currently. If you don't take it this year, Section 250 is provisions are applicable only for other general public utility. Medical is separate. There is no restriction for medical. You can do the business. 11(4), you will show that your business is running on the hospital. You are not caught by provision to Section 250. That's not business income. What you are telling, you will show that the grants or voluntary contribution. That the fees received are your business receipt. The fees received are business receipts. Fees are received during your course of business. Is there any doubt? So it is a business receipt. Who has told you? You are allowed to do that business by 11(4), provided your memorandum allows you to run the business of running hospital. You have to see that whether you are allowed to, as per your memorandum, whether it's a company or a society
your trust, whether it allows you to run a hospital. You are so it is your object, and your receiving the business fees are incidental to your running the business. So where is the problem? Only thing that you have to maintain your accounts correctly. But that's all. Yes. This is my view. Sir, can we come on clause 10? Sir. Can we come on clause 10, sir? Can we come on clause 10 of the form? Yes, sir. Yes. Clause 10, yes. It is asking for the name of members also in case of the society. Yes. So societies are having multiple branches and members, is it relating to the governing body of the because it's nowhere written in that particular line that it's. But for society, they are not writing governing body. Members of society they have written. Okay, sir. And that will not be possible. That's why my question was there. And sir, clause 22. Clause 22 of 10B. Yes, sir. So can we? Can you read it once, because I am not able to see it on the screen. Right. So my question is, during your deliberation you stated that in case we are unable to file certain names in form 10BD because we do not have the PAN numbers and Aadhaar. We have not filed it, but we have the names and addresses of the donors. So it doesn't become an anonymous donation in that case. Right. Which is that clause, sir? Under 22 itself. Do we have that? It's 23. Okay, sir. Thank you. Sir, 43F, here they are telling about whether the auditee has not complied with the requirement of any other law. So now, sir, whether it is, what will be the applicable laws or like that, or it is on the basis of no clerk, to what extent we have to report? And
31A, sir. Any other person, 31A, total sir. amount applied for charitable or religious purpose in India, it is contribution or donation to any other person during the previous year. Any. The whole amount. Sir, just one announcement. Few of you must be feeling hungry. So we are distributing the high tea packets, which you can bring here also. Just you have to take from outside. There is a room there. So we are distributing from there. So those who are feeling hungry now can go and take the packet and come back to the room. So it will be distributed up to 6 o'clock. That is not a Three problem. chairs for Nitesh ji. 3 chairs. Yes. Yeah, yes, one sir. or two last question. Yes. Just हाँ गंग जी yes. Switch on कीजिए ना, switch on कीजिए. हाँ, switch on किया हुआ है. हाँ बोलिए. Yes. हाँ ठीक sure. Sir, regarding item number 41, where we have to give details of specified persons. So whether the details of persons with whom we have transactions during the year, that to be given, or all the specified persons. Because okay, but section 13 there are so many names. Particularly, sir, in section 13 there is a specific person, people who have given donation of 50,000 or more in the entire period. You see, but if there is any transaction which is covered by section 13, if only those persons are to be given, or all the persons, say a trust has received donation of say 100 persons, because not only the persons, all their relatives, concerns in which they are interested, all are specified persons. But it is not only confined to donations, sir. You say. Sir, that is what I am asking. If there is any transaction which is a violative of section 13 with that person, or do we have to give the name of that person or all the donors? Because No, it is not the thing is that, sir, in case of a trust, there are hundreds of persons who might have given donations of more than 50,000 during the lifetime, because this 50,000 limit is for entire period, from this year or in earlier years, 50,000. And not only that, their relatives, concerns in which they are concerned, all these are specified persons. If we have to give that detail, then it will be impossible, because we cannot ask the donor to give the details of his relatives, the details of persons from related concerns. Okay. Thank you.
Yes. Your question, please. So one of my client is Charitable Trust, which is 100% government organization. And sir is yeah, yeah, yeah. Yeah, I correct. So, but last year at March 22, if the trust didn't file 10B and ITR 7. So, when we visited to CIT, he told that he doesn't have power. So, how we can file both of these now? 10B and ITR 7 both. Yeah. But CIT told that I have power for 10B, not for ITR 7. You just bring me the circular, I can. So I will apply only to CIT, not board and CIT both. No, no, I have gone to CIT. I have spoken for an hour. Okay. Okay, sir. Yes, last question, please. Last. Yeah, thereafter. Sir, trust is running a school, and in that school, when a student is unable to pay his fees, he writes to the trustees that my fees should be waived out. Let's say in a year we are waiving out fees worth 1 crore rupees. That we are showing that what was the gross receipt receivable to us less 1 crore rebate or discount given to the students. So this 1 crore what I am showing as a rebate, this will go as a donation in my case, or what should I do in view of the changes of the income tax? Yes. 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 Thank you, sir. No. That's what we are doing, but it is. Right, sir. Thank you. Thank you. Thank you. We are bound by the time, and another speaker is in the queue, and we are. So there is. So very nicely discussed by C.A. Sanjay Bhattacharya sir, the provisions related to IT returns and how to prepare and file. One thing which I could make out from the discussion made by Sanjay Da is that for each and every clause of 10B, we should prepare an Excel sheet in the same fashion whatever is this table is given. So if we maintain a table in Excel for each and every point, then only we will be able to fill up the forms. Otherwise, in my mind, it is too difficult to mention all the correct clauses, all the details with correction truly, correctly. So this is my view, and very nicely deliberated. Big round of applause for Sanjay Bhattacharya sir for nicely deliberated. May I now request Nilima ji to please offer a memento
to our speaker, Sanjay Bhattacharya sir. Nilima Joshi ji, memento to Sanjay Bhattacharya sir. Now we are welcoming the next speaker, C. Ramesh Patodia. May I request Gopal Ramji Gupta to please come forward and offer a flower bouquet and welcome our speaker, Ramesh Patodia. Now I request C. Ramavtari Joshi to please introduce our speaker, C. Ramesh Patodia. Thank you, Ramji, for giving me this opportunity to introduce a person like Ramesh Patodia. I think every person is dealing in the direct tax matters, he knows Ramesh Patodia. Mr. Patodia is advocate and FCA and practicing more than 3 decades. He is practicing direct tax, indirect tax, and also practicing courts also, and we are regularly sending High Court or Supreme Court judgment to us, which is very useful for all of us to know what is going on the courts and what we have to do for our clients. He had also authored several books on HUF 148 matters. I request all of you to please give a big applause to Mr. Patodia. Thank you, Mr. Patodia. Good evening, friends. My fellow speaker, great Sanjay Da on the dais, other members on the dais, friends, senior members of the profession present over here, members of both Central Kolkata Views Exchange, Nitish ji is, I think, busy organizing snacks for all the participants. Friends, I am really thankful to both Central Kolkata and Views Exchange for giving me this opportunity to be present here and give my views on this very important topic which deals with NGOs, trust, and the way the things are going, friends. You see, I'm in practice for last more than 35 years, and if I see the past and if I see what is going to come, friends, one thing is for certain in my opinion, that the income tax department is moving at a much faster speed than we are moving. And unless we also try to move at the same speed, if not at the higher speed, we will not be able to correctly discharge our duties and responsibilities in relation to any type of compliance under the Income Tax Act. And gone are the days when the things were being looked after by the officer or the clerks or the inspector sitting in the income tax department. They are now, if you visit any, I haven't visited any income tax office maybe for last 10 years, but if you see any income tax office, Aikar Bhavan, the officers are now busy on their mobile looking into YouTube and other videos, except for issuing notices under section 148 of the Income Tax Act, which I think there would not be any household in, at least in Calcutta I know,
which doesn't have 148 notice. And they are helpless because the 148 notice has to be issued in pursuance of risk management strategy which has been devised and which flashes on the system. The income tax department has its own system. The information flashes on the portal, inside portal, and once the information flashes, the officer doesn't have any option but to take care of that. At best he can seek approval from his higher authorities that whether I should go ahead or not, but in most cases it will. So friends, the artificial intelligence is taking role of everything. That is the way. And when Sanjay Da was giving details of form number 10B or 10BB, I think all of you or those who are engaged in filling in the forms, you should start from now only so that you can complete your form by 30th of September. If you can. Because the way the form has been designed, the information which they are asking, it is not a matter of joke. For a trust which is of a sizable, say 5 crore, more than 5 crore kind of a trust, which there are many, more than 5 crore, 5 crore is nothing. 5 crore, more than 5 crore trusts are in thousands, I think, all over the country. So, if you have to comply, it is time taking, and to the top of it, friends, the onerous responsibility that is being put on the chartered accountants who will be discharging their attest function with NAFRA sitting at Delhi, because NAFRA is now passing orders against chartered accountants in even small violations. There were some orders which were doing round in WhatsApp where NAFRA has imposed penalty, and recently I think one chartered accountant of South India, he was penalized for 1 crore rupees was the, I think, Cafe Coffee Day audit report was signed by him and penalty was 1 crore. So, chartered accountant who is in most of the NGOs, we are accustomed to doing honorary audit. कि भैया चैरिटी का है, क्या पैसा लेंगे, हम बिना पैसा ही ऑनररी ऑडिटर, खाली आप इतना ही लिख दो ऑनररी ऑडिटर, हमको उसी से सेटिस्फेक्शन है. बट फ्रेंड्स, आप ऑनररी ऑडिटर होने के पहले, इन द लाइट ऑफ द न्यू रिजीम, यू मस्ट थिंक ट्वाइस, थ्राइस, 100 टाइम्स, 49 टाइम्स एटलीस्ट जितना एंट्री है. एंड एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स आपको, दिस इज फॉर प्रोफेशनल्स, बट दोज हु आर मैनेजिंग द NGOs एंड NPOs एंड ट्रस्ट एंड सोसाइटी और कंपनी, मैंने ट्रस्टी बोलना बहुत अच्छा लगता है. मैं बोलता हूं कि यार मैं इस संस्था का ट्रस्टी हूं, तो मैं बहुत ही अपने को आई फील इलेटेड कि मैं पता नहीं क्या हूं. बट फ्रेंड्स, with the trusteeship comes the vicarious liability, because कोई भी कहीं भी कोई वायलेशन हुआ तो सबसे पहले पकड़ा जाएगा कौन. तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रस्ट जो है या कोई भी NGO बनाना बहुत इजी है, मगर उसको चलाना बहुत ही डिफिकल्ट पहले था. हम लोग बोलते थे, अब तो शायद बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है, होने जा रहा है और भी सर. सो फ्रेंड्स, दिस द लिटिल बैकग्राउंड आई वांटेड टू गिव प्लेस बिफोर यू इन द लाइट ऑफ द लिटिगेशन. मैंने आई फोरसी यूज. यस सर. फ्रेंड्स, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, देयर इज लिटिल ब्रेक. ये यहाँ पर जहाँ पर मोमेंटो रखा हुआ है, वहाँ पर एक पिंक कलर के फोल्डर में मेरा फोल्डर था, उसमें चेकबुक है जो कि मेरे को यहाँ पर पेमेंट करनी है. तो यदि किसी ने ले लिया है कि भाई ठीक है मेरे को नहीं मिला है, तो फोल्डर ले लिया है, तो प्लीज़ चेक कि उसमें चेकबुक तो नहीं है, यहाँ से किसी ने यदि उठाया तो.
प्लीज जस्ट चेक, यहाँ से किसी ने यदि उठाया तो, कोई भूल से उठा लिया। हाँ भूल से उठा लिया होगा या किसी को नहीं मिला तो उठा लिया होगा। हाँ वही पिंक वाला में से है। यहाँ से यदि किसी ने लिया है तो उसमें चेकबुक है, तो फोल्डर चाहे ले ले, मतलब चेकबुक मेरे को दे दे। ये हरि राम जी का फोल्डर है। हरि राम जी का फोल्डर तो राम भगवान का फोल्डर कोई ले नहीं सकता। राम भी है। तो so friends, with this little background, friends, let me come to the after the great deliberation by Suresh ji and Sanjay da on the topics which were allotted to them, friends. I am going to deal with three issues in during course of my deliberation. That is, first is CSR related issues. Second is the religious trusts, and third is some landmark judgments, friends. These are the three topics which I am going to cover during my deliberation. So friends, let me first come to the CSR issues. CSR issues, friends, when I am dealing with CSR issues, I am not talking about the provisions of the Companies Act 2013, which are there in section 135 and all schedule 7. I think I am not very conversant with the statutory provisions as far as CSR is concerned. I am not going to deal. Rather, I am going to talk about some of the issues which are relevant for the purpose of compliance of the taxation aspect in relation to those entities who are managing the CSR funds. Because now you see, every company which is making profits as may be prescribed is required to spend a particular 2% of its net profits during every year for the purpose of corporate social responsibility, and the purpose for which it can be spent is defined now. And the CSR rules which were brought in initially, they have been regularly amended, and last such amendment was made in the year 2022, friends. So as the things come up, the government acknowledges those things and changes the rules, etc. So in the context of CSR, friends, one particular thing which I have noticed, which generally the trusts make mistake, and on which I will give my opinion. Sanjay da is sitting here, I will invite his comments also if he is of a different opinion than what I am of. Friends, as far as corporate social responsibility funds are concerned, the primary liability to spend lies with the company. The primary purpose is with the company. Now, what happens? The rules have permitted this NGOs, companies under Section 8, societies, trusts, or now even 1023C registered organizations to act as implementing agencies. The company can involve these entities as implementing agencies in order to do the CSR work. Is it not? I think all of you will agree with me. So initially the questions kept on coming. Initially what was happening, hum log sab, we are all from Rajasthan, we are smart people. Bengalis are also intellectuals. I didn't mean to say that. So Sanjay, please excuse me. So friends, भाई है ना 2% यार, कंपनी का प्रॉफिट है 500 करोड़, 2% 10 करोड़ खर्चा करना होगा चैरिटी में, तो देन एडवाइस मिला यार ये ट्रस्ट को दे दो ना, खत्म करो, ट्रस्ट को दे दो, हो गया CSR. So this was being done. This was being initially, the questions from chartered accountants, advocates were being asked that if you give the fund to another trust, whether it is compliance of CSR or not. So then initially the rules were not that watertight. You could have done that. But now the rules are very, very watertight. What a trust acts is only a implementing agency
in order to implement the scheme. And if the funds are not actually utilized for the purpose for which it has been given, then the company is liable to give that money to the central government within a specified period of time. Unutilized amount has to be given to the central government. And there are stiff penalties for non-compliance. There are stiff disclosure requirements in the director's reports, etc. All of you must be knowing, friends. So, now the question arises that when I am, say, a implementing agency, I am acting as a implementing agency, and I have been given some CSR funds by a company, then how do I show it in my accounts? How do I reflect it in my income tax return? There are some people say that it is your income, so you have to take it to your income and you have to spend the amount out of that, and that you show as application of income. This is the way you have to do, and 85% is what you are required to spend. Friends, in my opinion, this is not so. Because when you are receiving CSR funds, mind it, you are only a implementing agency, nothing else. Your job is to do something which company is required to do, and they have taken your help since you are so-called expert in this field. So therefore, and any unutilized, for the sake of repetition, any unutilized amount is to be given back to the central government, though the liability is on the company, not on the trust. So friends, in my opinion, the things will depend what is the relationship between the company and the trust to which the funds have been given. Suppose if the company gives CSR funds to the trust, clearly giving in the letter where the funds are given, there must be a letter with which the funds are given, that this is the manner in which the funds are to be utilized. There will be conditions attached to the utilization, and there will be conditions that if you don't utilize the money for the purpose for which I have given you, then that amount is liable to be refunded back to me. You cannot treat this that as if once I have given you, it is all done. In that case, friends, I am asking a question to myself: is it my income? When I have received anything which a string attached, that this fund is to be used for this purpose only. If you do not use it for this purpose, then you have to give it back to me. There is a time bound period. You have to give me the UC also, utilization certificate. So this fund is not a fund which is in the nature of a voluntary contribution as normally understood. Voluntary contribution comes with no strings attached. मेरी इच्छा होगी जहां खर्चा करूंगा, कोई कंडीशन नहीं है. In that case, friends, in my view, it is not your income. It is a kind of a specified donation which is to be reflected in the balance sheet as a liability. It is to be reflected in the balance sheet as a liability. And any amount which you spend out of that CSR fund which you have received is to be debited to that liability. Suppose you have been given 1 crore rupees by a company as CSR fund. You spend, say, in the year of receipt 50 lakhs. So you debit that 50 lakhs to this 1 crore. And in the balance sheet you show the balance amount of 50 lakhs which is to be spent, say, in the subsequent years. Or if it is not spent, then it is to be returned back. This is the manner in which the accounting of the CSR funds is to be done. But not in a case, say, suppose in this case, the trust will take this 1 crore to its income and expenditure account and show 50 lakhs as expenditure, and then say that, okay, 15% of this 1 crore I am eligible to accumulate. This is not to be done, in my opinion. This cannot be done. It cannot be, but people, that there is a confusion
among the community regarding the CSR funds. This is, in my view, this is the manner in which the CSR funds have to be disclosed by the implementing agency in their audited, in their accounts, whatever may. Only thing is, if the funds are not returnable for any reason, I am not going to into reason that why the funds may not be returnable. But if you are sure that funds are not to be returned to you, in that case, you can treat it as your income, but not otherwise. So therefore, always, whenever any CSR funds are being received, the letter, the mandate from the company that why you are giving this fund to me, what is the purpose for which I have to utilize this fund, within how much time I have to utilize, all those things have to be looked into. That is an important aspect, friends. And another thing, friends, in the light of this, the decisions of Supreme Court, which I am going to cover, you have to take into account one more thing, that when you are acting as an implementing agency only, you are acting as implementing agency, I am repeating, whether your object permits you to act as implementing agency or not. Your object clause must permit you to act as implementing agency, otherwise it may be held to be that you are engaging in an act which is not permitted either, or you are engaging yourself in an act of business. By way of this implementation, you are making profits. So therefore, when you are acting as an implementing agency, friends, this care must be taken. Questions, sir, shall we deal now or? Chairman, sir. And another related issue is creation of asset out of CSR funds. बहुत लोग बोलते हैं कि माने अब मान लीजिए कि ये 1 करोड़ का एग्जाम्पल लेते हैं, 1 करोड़ रुपया ट्रस्ट को दे दिया, ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपया से क्या किया, एक कोई बिल्डिंग बना दी। 1 करोड़ में बिल्डिंग हालांकि बनती नहीं है, हाँ, 1 करोड़ में छोटी मोटी कुछ भी लैंड खरीद ली, बिल्डिंग बना दी, कुछ भी कर दिया, 1 करोड़ की ज़मीन खरीद ली ट्रस्ट के नाम से, तो ये एसेट कहाँ पे क्रिएट हो गई? एसेट तो ट्रस्ट में क्रिएट हो गई, मगर फंड्स था, CSR फंड्स था. Whether that is permissible, friends? That is not permissible. You cannot use the CSR fund for the creation of asset in the name of a trust with which you have no connection whatsoever. It is acting only as an implementing agency. Or if at all, maybe the trust is a related party, the same group की trust हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर what I understand is there must be some kind of a pervasive control of the CSR company, the company which is giving the funds. There must be some kind of control over the assets so that the trust is not able to do anything as far as that asset is concerned. So creation of asset out of CSR fund belonging to a company in the name of another entity which is the implementing agency, it is not possible in my opinion. It should not be done, friends. So, no, the thing is, sir, that is the thing. When you are trying to build a hospital, company in its name cannot do. So company in its name cannot hold. So the ideal way would be, say a company forms a Section 8 company. The CSR, the company which is trying to do CSR should form a Section 8 company in which it can be majority of control and it can have implementing agency also there, and the asset can be held in the name of that Section 8 company. Usage is the ownership of the asset is very, very important. Ownership.
Sir, the ownership of the asset lies with whom? Either you enter into a registered agreement that you are giving this with a condition that the implementing agency cannot do anything with that asset without the express written approval of the company. Either you enter into a registered agreement, not a simple 10 rupees stamp paper agreement. Ramesh ji, suppose the Sir. donation is being given Ah. to that implementing agency, that they can create the asset in their own name. So their implementing agency, as well as the donor has given, the company which has given the CSR donation gives with a condition that you can now purchase the asset. So in that case, it is possible or not? It is not possible. You mean to say implementing agency cannot? In my opinion, it is not possible. Rule 7(4), I think, to be, if I am not wrong. Company cannot own the asset. This is as far as, sir, I respect your view, sir. Yes, sir. I can add something. Actually, before the amendment which Sushil is talking about, before that, the CSR companies were creating the asset in their own name. Okay, like a school, hospitals. Then the CSR law has changed. That the company cannot be the beneficiary of the CSR fund, and they cannot own those assets. And those assets, if they're owning, within a specified time, they have to transfer to a public authority. And the public authority is defined under the RTI Act, under which they have to transfer those assets if the assets have already been created in the name of the company, the past assets from the CSR fund. And now, what about the further fund? The CSR law is said that those assets can be held either by the NGOs having 12BB and those registration, or by a public authority, but not by the company. The CSR law is not very clear on that. CSR law is not very clear on that, whether. But actually, this implementing in which. Actually, CSR law is evolving. But CSR law is evolving, and earlier it was not there. So we have to wait and watch how the. You see, Sureshji, rightly, the company cannot hold the asset directly in its name. However, at the same time, it cannot enter into an arrangement whereby the asset is being created in another name, with which company doesn't have any relationship whatsoever. That is what I am trying to say. It amounts to transferring asset to another agency. That is what is not permitted. This is the position according to me, friends, though there may be debate on this. If the school is being created by the trust, and trust is acting as an implementing agency, and it is a permitted activity as per schedule jo bhi hai, then you can give. Now, in such a situation, yes, you are right, friend. Sir, what happens in a situation like this, the trust will be, say, doing the construction of hospital on the land belonging to itself. Is it not? The land belongs to the trust, but the building, the structure which is coming up, the part of the construction cost has been borne by the company, but the part of the funds is being borne by the trust itself. So here what happens, the structure is owned by a different person, land is owned by a different person. That is possible. But this aspect is not very clear from the CSR rules, friends. This aspect has not yet been clarified in detail. The only aspect that has been clarified is that the creation of asset out of CSR funds, whether you can create asset in the name of a third party with the CSR funds belonging to you.
That is the thing. So indirectly it amounts to, what you are saying is indirectly it amounts to creating asset in the name of a third party. So facts will, each facts I think will lead to different situations. If you are engaging in any kind of a thing whereby the asset is being purposely created in a different name, then I think it may be a cause for concern. Otherwise, it may not be. So, friends, as far as the CSR, another aspect which is in relation to the CSR is deductibility under the Income Tax Act. CSR expenditure, whether it is deductible for the purpose of computation of your income. This issue is now no longer can be said to be alive, because already section 37 has been amended, and specifically explanation 2 has been inserted in section 37 that the CSR expenditure is not eligible to be allowed as a deduction. And it is also now settled law that it is to be the amendment is applicable only prospectively, not retrospectively. The decision is theirs, friends. PCIT versus Steel Authority of India Limited. ATG मिलेगा? I am coming to that. Now the question is कि ATG क्या होगा? ATG मिलेगा क्या? Because हम छोड़ने वाले नहीं है. भाई इतना चैरिटी दे रहे हैं तो कुछ तो दो. हाँ, चैरिटी का CSR फंड हम दे रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट तो इसमें कुछ भी नहीं दे रही. ये तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है उसका 2% है, तो गवर्नमेंट को तो जो टैक्स लेना था वो ले लिया. अनलाइक अदर कंट्रीज, यूएस में, फ्रेंड्स, यूएस में नियम है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देते हैं तो जितना रुपया आप दे रहे हैं उतना रुपया गवर्नमेंट भी देती है. सेम मैचिंग कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट इज देयर. तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट जो है बोलती है आफ्टर प्रॉफिट, जो आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है उसका तो मेरा टैक्स तो भैया दे दो. तो अब उसका कुछ तो हमको दो, टैक्स तो कुछ तो. तो फ्रेंड्स, ATG का जहाँ तक सवाल है, देयर इज अ डिसीजन ऑफ कैलकाटा ट्राइब्यूनल ओनली, JMS माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस PCIT कोलकाता 2021 130 taxman.com 180 in Kolkata Tribunal. Kolkata Tribunal has taken a view which I think that view can be taken, because when they are saying कि it is it has to be considered as eligible for deduction under ATG, and they have given reasons for that, because in the CSR funds which can be spent for the purposes which is specified in schedule 7 I think is there, स्वच्छ भारत सेस और एक दो और जो फंड्स है उसका नाम, उसमें भी आप पैसा दे सकते हो. तो वहाँ पे ATG 5 में स्पेसिफिकली इट इज़ रिटन दैट स्वच्छ भारत सेस के लिए कोई जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है एक्सेप्ट द कंट्रीब्यूशन विच हैज़ बीन गिवन आउट ऑफ द फंड्स फ्रॉम CSR, if it has been given for the Swachh Bharat cess, then that is not eligible for deduction under section 80G. A specific bar is there. So they have interpreted this by dealing with this, that when there is a specific bar in respect of these two, that means that in respect of others there is no bar. Had there been any bar, then it would have been specifically included in the section itself, as has been included in the case of Swachh Bharat and other funds to which contribution is made out of CSR funds. So that is the one of the decision, friends. Before that there was a decision of Bangalore Tribunal also is there. There are 2-3 tribunal decisions are there, not decisions of High Court or Supreme Court. So to the you can see that it may not be sustained in the higher authorities, but you can take a risk of claiming ATG in respect of the CSR contribution, friends.
That is why I am saying, friends, कि yes, sir. Corpus. कॉर्पस माने वही जो एसेट क्रिएशन का जो हम लोग बात कर रहे थे उसी टाइप का. No, I don't think so, friend. I don't think so. Sir, ये judgment, see this judgment has to see the courts. As of now, it is a tribunal judgment. This is the only judgment which is alive, friends. Tribunal judgments and Calcutta ITT judgment. So let us now not discuss much Then on this. another issue which is concerned with the CSR is regarding the input tax credit in relation to the expenditure on CSR, whether input tax credit you will be eligible to claim or not. So I think that has been in the Finance Act of 2023, the amendment has been made in section 17(5) of the CGST Act, where a specific subclause FA has been included that goods or services are both received by a taxable person which are used or intended to be used for activities relating to obligation under CSR is a barred credit under the CGST Act. So therefore, input tax credit in respect of the CSR funds will not be eligible in view of this, friends, the clearly specified. So these are the, friends, some of the issues related to CSR which I wanted to discuss with you. Now let me move on to the next topic, is the landmark decisions, friends. And when the question of landmark decisions we discuss, obviously the two most important decisions which were pronounced in the month of October 2022 by the Honorable Supreme Court 3 judges bench with Chief Justice Lalit constituting part of the bench are most important decisions in the arena of this charitable entities, friends. And it is going to hit each and every charitable trust, NGO, whatever may be. And lot of people, they still don't know. Lot of NGOs, because NGOs are basically, you see, not that well organized. Because क्या होता है, एक तो अपने कोई भी संस्था, अपने सभी किसी न किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं ये, और संस्था जो है इतनी कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल सिस्टम, आईटी वगैरह जो है इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है किसी भी संस्था में. तो इन सच अ सिचुएशन, फ्रेंड्स, in the light of the amendments which are coming regularly for last 3-4 years, and in the light of 49 clauses which Sanjay Da narrated and Suresh ji gave detailed about the maintenance of accounts, etc. I think you may have to use the services of ChatGPT. मेरे को लगता है वहाँ से कुछ उसमें भी सेमिनार करवाना पड़ेगा, फ्रेंड्स, बिकॉज लोगों को मालूम ही नहीं है यार. अक्टूबर में जजमेंट आया है, अभी मार्च अप्रैल आ गया, अभी जजमेंट है क्या? रेगुलरली लोगों का वायलेशन के केसेस हम लोगों के पास आ रहे हैं. कल भी एक केस आया, उसमें 3 करोड़ रुपया उसने कोई वायलेशन करके रखा है, 3 करोड़. अब वो क्या करे, सब हम बोले भाई हम क्या करें. हाई कोर्ट आर्टिकल 226 इज नॉट ए रेमेडी फॉर एवरीथिंग. हाई कोर्ट को भी जहाँ कोई गली मिलेगी तभी तो हाई कोर्ट हेल्प कर सकता है. when you are violating the law, ignorance of law is no excuse. So friends, as far as NGOs are concerned, I think tough times are ahead for all of us, though not for us. Friends, new noble
Educational Society versus Chief Commissioner of Income Tax. That was the first decision which came, which basically dealt with the interpretation of the provisions of section 1023C of the Income Tax Act. 1023C आप लोग वाकिफ होंगे, 1023C एक सेक्शन है जो सेक्शन 10 वाले ब्रैकेट में है, दैट मीन्स कि इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 में कुछ भी होता है माने इनकम एग्जेम्प्ट है। हाँ, दो गवर्नमेंट की इच्छा हो तो हटा भी देता है, जैसे 1038, हाँ, या फिर और भी जो है अभी जो LIC का एन्युटी ये सब जो है गवर्नमेंट जब इच्छा हो तो 10 इज़ नो लॉन्गर, आप बोल नहीं सकते हो कि एग्जेम्प्ट इनकम के लिए ही है, अनएग्जेम्प्ट के लिए भी 10 है अभी। सो 1023C का इंटरप्रिटेशन वाज ऑन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द मैटर वेंट अप टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, because Andhra Pradesh High Court had decided against the assessee in this case. What was the dispute, friends? The dispute were twofold. The first dispute was that it was argued by the department that when you are claiming the approval or exemption under section 1023C 4 or 6, as the case may be, dealing with medical or education, if you are engaged in an educational activity or a medical activity, then you must exist the word written. Can I get? So 1023C, let me take out the relevant provisions, though 24 provisos are there as Sanjay Da was dealing. एंड 24 प्रोवाइजो से एक चीज़ याद आया, एक बार मैं एक ग्रेट आहूजा जी, गिरीश आहूजा जी का सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो उन्होंने क्वेश्चन किया इनकम टैक्स एक्ट में कितने सेक्शन है, तो एक जन ने खड़ा होकर बहुत, अरे 296, बोले नहीं बैठ जाओ 421। कैसे? बोले 1023C में 24 प्रोवाइजो है, सब सेक्शन है कितने, सारे सेक्शन जोड़ो तो 296 नहीं हो। So I am reminded of that, friends. So 1023C जो सबसेक्शन 4 है फ्रेंड्स, उसका जो लैंग्वेज है, इट एग्जिस्ट सोली फॉर द पर्पज, बेसिकली सोली वर्ड वहाँ पे है। तो अब सोली को लेके क्वेश्चन उठ गया कि आप सोली हो कि नहीं हो। अब जनरली क्या होता है, जब भी कोई ट्रस्ट बनाया जाता है, NGO बनता है, कंपनी बनता है, तो हम लोग क्या एडवाइस करते हैं कि जितना भी डालना है सब डाल दो, जितना ऑब्जेक्ट तुमको करना है नहीं करना है सब कुछ डाल दो, जिससे बाद में कभी भी करना पड़े तो आपको अमेंडमेंट करने का दरकार नहीं लगे, नहीं तो फिर से आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर से फीस लगेगी। तो हम लोग मेमोरेंडम में मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज तो अच्छा से डाल देते हैं और अदर ऑब्जेक्ट में भी, हाँ, एंसिलरी ऑब्जेक्ट में भी सब कुछ डाल देते हैं, ठीक है ना। यही तो हम लोग करते आए हैं बचपन से, जब से पढ़ाई किया है, CA पास किया, तब से यही कर रहे हैं। तो वहाँ पे सोलली लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट सेज यू आर नॉट एग्जिस्टिंग सोलली, यू आर नॉट एग्जिस्टिंग सोलली फॉर एजुकेशन पर्पजेज, गॉन, तुम्हारा अप्रूवल इज गॉन। एंड सेकेंड पॉइंट विच वॉज आर्ग्यूड बिफोर द ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट वॉज that as per the law prevailing in Andhra Pradesh, the trusts are required to get itself registered under the Local Charities Act. So therefore, the question was whether when you have not registered yourself with the local charities, whether you have complied with the provisions or not, and whether you are eligible for 1023C or not. These two were the main questions which were there before the Honorable Supreme Court, friends. And in that context, Supreme Court said that when the word written is solely, that means you cannot engage yourself in any other activity. आप एजुकेशन का है तो खाली एजुकेशन का ही काम कर सकते हो, और एजुकेशन के अलावा आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो गलत है, वो गलत है। माने गलत क्या, माने आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो देयरफॉर, बिकॉज उसका रीजनिंग क्या है कि दैट मीन्स योर ऑब्जेक्ट क्लॉज परमिट्स यू टू डू अदर थिंग्स, यू मे नॉट बी डूइंग, that doesn't matter, but your object clause allows you to do.
Therefore, in case you have any income, you can spend it for that purpose. So you are not existing solely for that purpose. तो इसमें other side argued कि my lords, we are predominantly engaged in that. The test of predominance should be applied here, because in the case of American Hotel and Lodging and Queen's Education Society, these two were the decisions of Honorable Supreme Court itself, where the Supreme Court applied the predominance test, that if predominantly you are engaged in this, then you pass the test. So therefore these arguments were put forward by the SSC in New Noble's case. But Supreme Court say we do not agree with the views of those two cases. We overrule the decisions of Queen's Education Society and American Hotels case. So, gaya. So therefore, in New Noble's case, friends, वो दोनों डिवीजन बेंच के थे, 2 judges benches, ये 3 judges bench है. New Noble is 3 judges with CJI at the top. So the Supreme Court in New Noble Society let down, friends, and in New Noble Society, friends, the Supreme Court has now settled the law that अगर आप 1023C का बेनिफिट ले रहे हैं, आपकी कोई भी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, मेडिकल की एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिसमें अभी 5 करोड़ तक तो ऐसे ही एग्जेम्प्ट है, 5 करोड़ तक के लिए तो कोई आपको अप्रूवल का दरकार ही नहीं है. ये कितनी बड़ी बात है कि आप कोई स्कूल चला रहे हैं और आपकी रिसीट 5 करोड़ रुपए तक है, तो आपको कुछ अप्रूवल वगैरह की दरकार ही नहीं है, आप चलाइए आराम से. 1023C Roman 3A, I think. It is only when it is beyond 5 crores that you are hit by these provisions. And ये 5 करोड़ वाला भी पहले 1 करोड़ था, 1 करोड़ को 5 करोड़ गवर्नमेंट ने किया, संग संग ये भी कर दिया, मगर कि पहले क्या करते थे लोग 1 करोड़ करके और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 10 तो स्कूल चल रही है तो 1 करोड़ नहीं वो 10 करोड़ हो जाता था, तो अभी ये कर दिया एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 करोड़ है. सो देयरफॉर फ्रेंड्स, this New Noble Society, the interpretation of the word solely was given by Supreme Court, and now every entity which is enjoying 1023C, they should look for their objects, जो भी उनका है, कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कुछ भी है, they should, if they have not yet done so, they should immediately take steps for taking care by amending the objects. Otherwise, they are likely to be visited with this. Main is the only object. Only object यही होना चाहिए और कोई ancillary object वगैरह का कहानी नहीं है कुछ. इसको परस्यू करने के लिए आप अदर ऑब्जेक्ट से, मान लीजिए कि स्कूल का फंड है उसको यूज करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो सब कर सकते हो, वो सब अदर ऑब्जेक्ट्स हो गया. दैट इज, बट योर ऑब्जेक्ट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन. अब एजुकेशन में एक में जब यहाँ चल रहा था डेलिब्रेशन, एक में क्वेश्चन सुन रहा था, सो आई कैन टेक अप दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, दैट वेदर इफ आई एम रनिंग अ हॉस्टल or if I am running, say, if I am providing bus services, so whether it will be within my objects. Friends, in my opinion, in a college or a school, all these are inextricably linked to the maintenance of the school and college. Take the example of, say, BITS Pilani, the name which comes to my mind, Birla Institute of Technology and Science Pilani में आप लोग जाइए, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या take the example of Jadavpur University here, or any big university, friends, where the campus is, say, more than, say, running into kilometers. So in such a situation where the students live in the college 365 days a year, they require not only reading in the classroom,
दे हैव टू बी गिवन एवरीथिंग. उनको सिनेमा हॉल भी चाहिए, मल्टीप्लेक्स भी वहां बनाना होगा, उनको कैंटीन भी चाहिए, उनको हॉस्पिटल भी चाहिए, उनको रिक्रिएशन भी चाहिए, एवरीथिंग दे नीड. बैंक भी चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी भी चाहिए, everything which a person needs for daily livelihood, that is required to be given compulsorily. In fact UGC requires it. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का आप देखिए, जो सेंट जेवियर्स आप देखिए राजारहाट में जो कैंपस है. सो फ्रेंड्स, इन दैट केस अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए एक सिनेमा हॉल बना दिया गया, मल्टीप्लेक्स वहाँ पे, हाँ मैंने वन कैनॉट से कि ये मल्टीप्लेक्स जो है इट इज़ अ माई बिजनेस. It is inextricably linked to the activity of education, and therefore everything is exempt. Only thing is that you are maintaining all these activities, there is no issue in that, but while pricing the activity, the question of pricing, you should now take into account the decision of न्यू नोबल एज वेल एज अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, कि आप मान लीजिए वहाँ पे खाने का जो प्राइस है, हाँ वो क्या है, हाँ एंटरटेनमेंट का टिकट है, सिनेमा है वहाँ पे, उसकी टिकट कितनी है, हाँ. या अब मान लीजिए इसमें एक चीज़ है, हॉस्टल है, हॉस्टल में आप स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हो तब तक तो ठीक है, मगर आप बाहर के स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर रहे हो इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू, then that is a cause of concern. Then that will amount to engaging yourself in trade, commerce or business, or services in relation to trade, commerce or business. Separate books of accounts? नहीं, it is not your business sir. In my humble submission, ये सब चीज़ें अगर कोई बोलता है बिजनेस है तो फिर मैंने सिमिलरली इसमें मैंने वी हैव टू, उनको अगर कोई ऐसा बोलता है तो मैं उसको बोलूँगा भैया जाके बाहर चलो, मैं लेके चलता हूँ हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में चलो, जहाँ 500-500 एकड़ का कैंपस है, वो देख के वो पागल हो जाएंगे जो अगर कोई क्वेश्चन करता है दिस. सो व्हेन द थिंग्स आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू योर एक्टिविटी, देन इट इज़ नॉट ए बिजनेस एट ऑल. बिजनेस का कोई सवाल ही नहीं है, स्टूडेंट्स को जो चाहिए वो देना ही होगा. सो फ्रेंड्स, ये जो डिसीजन आया न्यू नोबल सोसाइटी का, उसमें ये दो चीज़ें कही गई. प्लस यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, एक क्वेश्चन और उठ रहा था कि अदर माने वायलेशन ऑफ अदर लॉस, जो अभी एक्ट में भी आ गया है, इफ़ यू वायलेट एनी अदर लॉ देन दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न. सो बेसिकली वायलेशन ऑफ एनी अदर लॉ, ऐसे तो ये कंट्री में कितने लॉ हैं पता नहीं, शायद 10-20 हज़ार लॉ तो होंगे ही. हाँ, तो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऑडिटर पे ही डाल दो या ट्रस्टी पे डाल दो कि मैं कोई लॉ को वायलेट नहीं किया हूँ, हाँ, तो इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल. वायलेशन ऑफ लॉ मीन्स वायलेशन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ इन माई ओपिनियन. द लॉ विच मेरिट्स सम काइंड ऑफ माने रिपरकशन फॉर दैट ट्रस्ट. अगर आपको ट्रस्ट को स्पेसिफिकली ट्रस्ट के लिए एक लॉ बनाया हुआ है, बॉम्बे में जैसे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, गुजरात में भी है, चैरिटी कमिश्नर है बहुत जगह, हम लोग वेस्ट बंगाल में, हाँ वी शुड बी थैंकफुल टू दोज, कोई गवर्नमेंट वाला नहीं है ना यहाँ तो यहाँ चैरिटी कमिश्नर नहीं है, वो बॉम्बे में चैरिटी कमिश्नर है जहाँ पे 2% ऑफ द कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था, जो स्टेट है बॉम्बे में हाई कोर्ट से स्टे किया हुआ है. तो ये चैरिटी कमिश्नर सब जगह है. राजस्थान में अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, राजस्थान में ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट several institutions have received notices that you are violated because you have not registered yourself with the Devasthan and other Rajasthan Act. ये जजमेंट को ऑलरेडी एक्शन में आ गए हैं. सो फ्रेंड्स, तो कमिंग टू द लॉ मीन्स द लॉ विच इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट and which you are not following.
ऐसे तो 50 तो है, जीएसटी लॉ है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, प्रोफेशन टैक्स है, कई तरह के लॉ है, कितने कितने लॉ है भैया। ऑडिटर को भैया आप फीस तो दोगे 500 रुपया और उससे काम कराना है 5 लाख का, नहीं करेगा वो, नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर फॉर्म 49B अभी भरने के बाद सितंबर तक कंप्लीट कर दे, हाँ मैंने वर्चुअली इम्पॉसिबल इन माय ओपिनियन। 13 का लिस्ट ऑथर, अरे ऑथर ट्रस्ट बना 50 साल पहले, ऑथर को तो ऑथर का कुछ नाम पता ही नहीं है। उसके बीच में अभी तक कितने ट्रस्टी आए गए, हाँ उनका मिनट्स बुक कोई बना हुआ हो तब तो बताए। हाँ मिनट्स बुक कितने ट्रस्ट का है, मिनट्स बुक है ही नहीं, कुछ नहीं है, ट्रस्टी का नाम ही नहीं है कोई, या डिक्लेरेशन ऑफ, जनरली लोग क्या करते हैं हम लोग की एक डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्टी बना देते हैं, अभी एट प्रेजेंट ट्रस्टी कौन कौन है, मगर वो सब कितने लोगों ने बनाया हुआ है, बिकॉज ये सब प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ कितने ट्रस्ट करते हैं, कोई नहीं करता है फ्रेंड्स, दैट इज। सो फ्रेंड्स आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द जजमेंट ऑफ न्यू नोबल सोसाइटी। 1023C आप लोग का ही माने एक चीज़ ये भी माइंड में आता है कि 1023C को रखें कि इसको यार हटा के 11 में आ जाए, बिकॉज पहले जो है जब 1023C में कुछ फ़र्क था, अब तो क्या है जो 1023C एक तरह का मिरर हो गया है, 1023C एंड 11 आर नाउ मिरर, एवरीथिंग प्रैक्टिकली सेम है। तो आपको 1023C में अमेंड करके एक ही ऑब्जेक्ट आप कर सकते हो, 11 में कम से कम आपको अभी वो कहानी तो नहीं है। सो दैट इज, हम वहाँ भी आ जाएगा, कोई सुन गया आप बोल दिए क्या जी। if you are not, then will not apply, yes, it is advisable, now friends, now let me come to the next important decision, which is the decision of Ahmedabad Urban Development Authority. Ahmedabad Urban Development Authority also friends, no less an important decision. उसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि ये क्या कहानी क्या है अहमदाबाद अर्बन। तो फ्रेंड्स आप लोग चैरिटेबल पर्पज, द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल पर्पज इज गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट। चैरिटेबल पर्पज का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चैरिटेबल पर्पज इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल relief, preservation of environment and preservation of monuments or places of or objects of artistic or historic interest and माने ये जितने मैंने आपको पढ़ के बताया, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, योगा, हेल्थ एंड सब, ये सब लिखने के बाद में एक एंड बीच में दिया हुआ है। एंड क्यों है? ये सेपरेटर है एक तरह का, कि इतना जो मैंने पढ़ा उनके लिए ट्रीटमेंट अलग है, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस डज नॉट अप्लाई टू दोज एक्टिविटीज। इफ ए चैरिटेबल ट्रस्ट इज एंगेज्ड इन दोज एक्टिविटीज, अहमदाबाद अर्बन डज नॉट अप्लाई। इट अप्लाइज ओनली फॉर जो एंड के बाद जो लिखा हुआ है उसके लिए, जो मैं पढ़ रहा हूं अब, and the advancement of any other object of general public utility। तो चैरिटेबल पर्पस की जो डिफिनीशन है, आप सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है? इनकम डिराइव्ड बाय ए ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पजेस। रिलीजियस पर्पजेस पे मैं आऊँगा, चैरिटेबल पर्पजेस वहाँ पे दिया हुआ है। तो चैरिटेबल पर्पस क्या? चैरिटेबल पर्पस के लिए आपको आना होगा सेक्शन 215 में। सेक्शन 215 में 4-5 चीज़ें शुरू में लिखी हुई है, उसके बाद में एंड द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी विच इज अ जनरल जीपीयू, जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जीपीयू। जीपीयू कैटेगरी में जो लोग हैं, ये जजमेंट जीपीयू वालों को एप्लीकेबल है। जीपीयू में कौन है?
जैसे ये है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस इज जीपीयू, ठीक है ना। तो दिस विल बी, अगर इनके पास 10, 11 का है तो ये जीपीयू कैटेगरी में इनकी एक्टिविटी आएगी, या कोई भी एसोसिएशन है, या हम लोग और कोई भी काम करते हैं जो इस सब में फॉल नहीं कर रहा है, तो आई विल बी विच इज माने फॉर द पब्लिक गुड, देन आई एम डूइंग एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब एक क्वेश्चन उठ रहा था अभी, सर कोई आप पूछे थे शायद कि बिजनेस एजुकेशन माने बिजनेस हो सकता है क्या, मेडिकल बिजनेस हो सकता है क्या? सर बेलव्यू क्या है, बेलव्यू नर्सिंग होम, नर्सिंग होम तो है, बट ये चैरिटेबल है कि बिजनेस है? हाँ जोर से। बीच कैनेडी हॉस्पिटल, बीच कैनेडी नाम सुना है आप लोगों ने? बीच कैनेडी बहुत ही फैंसी नाम है, सुनने से मन में लगता है यार कोई अच्छी जगह है। बीच कैनेडी 7 स्टार। तो बीच कैनेडी हॉस्पिटल इज एंजॉइंग सेक्शन 11 एंड बेलव्यू, आई कैनॉट से बीच कैनेडी मैं इसलिए बोल सकता हूं कि रिपोर्टेड डिसीजन है बॉम्बे हाई कोर्ट का, हाँ, इसलिए मैं बोल सकता हूं विथ कन्विक्शन कि बीच कैनेडी एंजॉइंग सेक्शन 11 बेनिफिट की है चैरिटेबल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिंब जो बताई पहले, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन, रिलीफ ऑफ द पुअर, इन सब के लिए बिजनेस है कि नहीं है वो एप्लीकेबल नहीं है। माने लामाटीनियर, लामाटीनियर क्या है मैं नहीं बोला हूं इट कम्स फ्रॉम द हाउस, बिकॉज यू कैन सी फीस कितना है, 10 लाख रुपया फीस एडमिशन के लिए तो छोड़ दीजिए, रेगुलर फीस कितना है और एक्टिविटीज कितना है। फ्रेंड्स, ऑल दिस माने स्पीक्स इन इटसेल्फ कि इट इज बिजनेस, बट द लॉ सेज कि ये जो बिजनेस की जो क्राइटेरिया है दैट विल नॉट अप्लाई टू दोज कैटेगरीज। सर क्वालिटी एजुकेशन आप सस्ते में दे सकते हो, सर क्वालिटी एजुकेशन आप सस्ते में नहीं दे सकते हो। आर यू ट्राइंग टू से दैट द क्राइटेरिया इज कि यू शुड नॉट मेक प्रॉफिट्स, you should run the organization on no profit no loss or at best at a marginal profit. Yes, that is the criteria sir. आपका कहना एकदम माने I take it, but ये this is the law। और माने यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स में तो नहीं है, अगर कोई हो तो एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, इफ माने लिटिल रिसर्च इफ आई हैव डन, जितने भी स्कूल्स हॉस्पिटल्स हैं, एटलीस्ट स्कूल्स तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जाके स्ट्रिंग्स जो है वो अटैच्ड है। फ्रेंड्स, लेट अस नॉट गो इनटू दैट, बहुत डीप रूटेड वो टॉपिक इटसेल्फ में। एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी अगर है तो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पे आपको आना होगा। देन इसका प्रोवाइजो जो है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोवाइजो सेज provided that the advancement of any other general object of general public utility shall not be a charitable purpose। GPU ऐसे तो charitable purpose है, मगर it shall not be a charitable purpose if it involves the carrying on of any activity in the nature of trade, commerce or business। अगर इस एक्टिविटी के चलते आप कोई ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस में इंगेज हो रहे हो, या any activity of rendering any service in relation to trade, commerce or business for a cess or fee or any other consideration। माने दो चीज, या तो आप ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस कर रहे हो, माने सेल परचेज कर रहे हो गुड्स, या कोई सर्विस दे रहे हो इन रिलेशन टू ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस, then the advancement of any other object of general public utility will not be a charitable purpose unless और एक चीज और इसके बीच में ये भी लिखा हुआ है, irrespective of the nature of use और application। माने हम ये बोले कि यार ये जो हम कर रहे हैं उससे जो पैसा आता है वो हम चैरिटी में लगा रहे हैं, ये हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो दैट इज नॉट
दैट इज नॉट अंडरस्टूड, वो हमको मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो, irrespective of, unless such activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of GPU, unless such activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement and the aggregate receipt from such activity do not exceed 20% of the total receipt of the trust for the year. तो फ्रेंड्स, अब जो भी, अब ये चीज़ जो है ना, ये जो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, और हम चैरिटी में हैं कि नहीं है, हम चैरिटेबल पर्पज में हैं कि नहीं है, दिस वॉज ए कंट्रोवर्सी सिंस लॉन्ग and several decisions of Supreme Court are there. सूरत आर्ट सिल्क मिल 121 ITR, सूरत आर्ट सिल्क मिल से लेके देयर आर इनन्यूमरेबल जजमेंट्स जहाँ पे कि आप चैरिटी में हो कि बिजनेस में हो. मान लीजिए, अब जैसे एक एग्जांपल जो मैं दिया करता हूँ, लिज्जत पापड़, मान लीजिए अब बड़ा ब्रांड नेम है और कुछ महिलाओं ने स्टार्ट किया बनाना पापड़, और उन्होंने लिज्जत पापड़ को एक इस तरह का ब्रांड बना दिया कि महिला गृह उद्योग कि वो आज माने पूरे वर्ल्ड में जो है पापड़ बिक रहा है. तो माने अब वो लोग क्या पापड़ सेल कर रहे हैं बना के, तो देन वेदर दे आर इंगेज्ड इन बिजनेस. तो ये तो हो गया एक बहुत ही माने एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया. बट बहुत तरह के ऐसे जो सिचुएशन है, या टेक फॉर एग्जाम्पल दिस BCCI हॉल में, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यही मेरे माइंड में आ रहा है कि ये हॉल है, इस हॉल को BCCI जो है वो रेंट पे दिया है. आज जो सेमिनार हो रही है इस पे रेंट पे, नितेश जी जानते हैं कितना रेंट दिया है. तो इस हॉल को रेंट पे दिया गया है. तो अब द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो हॉल का जो रेंट है ये क्या बिजनेस एक्टिविटी है या चैरिटेबल इनकी पर्पज है? हु विल डिसाइड? बोले हम तो भाई प्रमोशन कर रहे हैं, इतने लोग आके 240, 200, 250, 300 आदमी आके यहाँ पे एजुकेट हो रहे हैं, सुन रहे हैं, इतने लग, तो और इससे बढ़ के क्या होगा? चैरिटेबल ही तो है, हम तो ये बोलेंगे. ठीक है ना, यही है, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि वायलेशन नहीं करे चैरिटेबल ट्रस्ट का. तो फ्रेंड्स, हियर माने द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सूरत आर्ट सिल्क मिल से लेके कितने डिसीजन आए, क्वींस एजुकेशन सोसाइटी, और उसके बाद आपके अमेरिकन होटल एंड लॉजिंग, और माने इननंबरेबल जजमेंट्स केम. बट द लॉ वाज फ्लूइड. कोई भी ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं था कि ये बोल दे कि हाँ ये बिजनेस होगा कि नहीं होगा. ये इनएक्सट्रिकेबली जो वहाँ पे है ना कि अनलेस इट इज़ इन रिलेशन टू द, तो वो चीज़ क्लियर नहीं था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में, दिस वाज द सब्जेक्ट मैटर कि वेदर ऑब्जेक्ट ऑफ GPU जो है व्हेन इट विल बी हेल्ड टू बी बिजनेस. और इसमें देयर वर मल्टीफेरियस अपील्स, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द पार्टी, एंड देयर वर सेवरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो. Ahmedabad Urban Development Authority means what? It's a government organization only. There were other trade associations, Chamber of Commerce. So all these were parties in this, and Supreme Court has dealt with the contentions of each and every type of such entity by basically saying that in what situation the entity will be said to be hit by the प्रोवाइजो. एंड इसका बॉटम लाइन जो है फ्रेंड्स, बॉटम लाइन यही है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो एक तो उसका कंसिडरेशन आप कितना चार्ज कर रहे हो. अगर आपका कॉस्ट 100 रुपया है और आप 200, उसमें एग्जाम्पल में इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, CA इंस्टीट्यूट का, कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आप कितने में बेच रहे हो. बोले हम लोग एडवाइस दे दिया, मैंने एडवाइस दे दिया, यार 1 लाख स्टूडेंट है, 100 रुपया भी लेंगे तो कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया ना. प्रिंट करने का कितना लगता है? 1 लाख में प्रिंट हो जाएगा.
बोले एक आपका कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कितना है, 1 रुपया, और आप दे रहे हो कितने में, 100 रुपया, काम खत्म। नाप दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एग्जाम्पल दे के नाप दिया कि कॉमर्शियल हो कि नहीं हो, कहानी खत्म। इन रेस्पेक्ट ऑफ से ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिस, आप हॉल को रेंट पे दे रहे हो, अगेन दैट कॉस्ट थ्योरी। बेसिकली आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको ये देखना होगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ सर्विसेज क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मैं बेसी ले रहा हूँ पैसा, तो आई एम एट ए रिस्क बेसिकली। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया, मगर अपने जनरली 10% बोलते हैं यार, 10% तो, हाँ 10% तो रीजनेबल है, 10% तो हम ले ही सकते हैं, नहीं तो ठीक है ना। तो हाँ 15% आप एकुमुलेट भी कर सकते हो, सही बोले हैं भाई साहब। हाँ तो 10-15% तक तो चल सकता है, मगर जहाँ आप 10 का चीज़ 20 में बेच रहे हो, तो वहाँ पे ये एवरी टाइप ऑफ एंटिटी विच इज एंगेज्ड इन जीपीयू, उसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है। ओनली फॉर जीपीयू कैटेगरी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बीच कैनेडी हॉस्पिटल है, उसको अहमदाबाद अर्बन अभी तक प्रॉब्लम नहीं किया है। दो क्वींस एजुकेशन सोसाइटी का केस है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़िएगा जिनको इस बारे में और जानकारी चाहिए कि, और ये चीज़ भी क्लियर है एकदम कि सीबीडीटी का सर्कुलर है कि जो माने बिजनेस का जो भी कंसेप्ट है, दैट अप्लाइज ओनली टू द लास्ट लिम्ब, not to the earlier limbs. There is a CBDT circular specifically on this point. So if I am running a education institution or hospital and I am still doing business, then I am not hit by this. ये इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया है. So therefore to that extent they are not at a risk. Though Queen's Education Society में Supreme Court has laid down certain guidelines, parameters कि when a organization will be said कि ये business के लिए exist कर रहा है. इट इज़ नॉट, हाँ सर वो जजमेंट में है, जजमेंट में है ये कि वो ऐसा नहीं है कि फिर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कुछ भी धड़ल्ले से करे, हाँ जोर से माने ईयर टू ईयर प्रॉफिट ही किए जा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली एसेट क्रिएट कर रहा है. ICAI, वेरी गुड क्वेश्चन. वेदर यू आर इन एजुकेशन और नॉट, that is already decided by Lok Shikshana sole trustee Lok Shikshana case. Education means no, education माने ये जो अभी जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये एजुकेशन नहीं है. This is not education as understood for 215. Education means education as understood in the legal way. Scholastic education in accordance with the affiliation. फिर तो जितने भी ये वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर हैं, कंप्यूटर सेंटर हैं, हाँ क्लास चला रहे हैं, ट्यूशन चला रहे हैं, यूट्यूब में भी फिर तो एजुकेशन जो है ज़बरदस्त हो रहा है. तो दैट इज़ नॉट एजुकेशन, तो वो दैट इज़ क्लियर फ्रेंड्स. सो ये जो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफिकली, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्लैरिफाई किया कि वहाँ पे जो लैंग्वेज है 215 में फॉर अ सेस फी और कंसिडरेशन ऐसा लिखा हुआ है, सेस फी. तो सुप्रीम कोर्ट से राइटली सो इन माय ओपिनियन ऑल्सो कि सेस का माने है कि देन इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो इट, बिकॉज सेस कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो सेस चार्ज कर नहीं सकता है. द सेस कैन बी चार्ज ओनली बाई वे ऑफ अ स्टैच्यूट. दो दे हैव सेड कि if you are doing any activity by virtue of a statute permits you to do that, then you will not be hit by the commercial angle. Then माने you may charge any amount that will not be held to be commercial. उतना उन्होंने बोला है. So friends, these two decisions GPU कैटेगरी में जो काम कर रहे हैं उन सब के लिए इट इज़ अ माने कॉज ऑफ
कंसर्न, हाँ धर्मशाला भी जीपीयू में आ गया, नहीं रिलीफ ऑफ द पुअर में आ सकता है। धर्मशाला को आप है ना रिलीफ ऑफ द पुअर जो है, देखिए धर्मशाला में कोई मेरे को बोले कि आप ठहर जाओ, यार धर्मशाला में कौन ठहरेगा। पहले वाला बात नहीं है कि बांगड़ धर्मशाला, पहले क्या है हम लोग बचपन से सुनते हैं बांगड़ है, बिरला है, इनकी धर्मशाला जो है जगह जगह, हाँ हालांकि बनारस में जैसे जयपुरिया धर्मशाला है और भी है सूरत वो, हाँ तो ये हरिद्वार में है राजा राम जी स्वर्ग आश्रम है, हाँ वो धर्मशाला नहीं है, वो एक तरह का रिच है। तो धर्मशाला इन द ट्रू सेंस, तो इन माय ओपिनियन फ्रेंड्स, धर्मशाला इन द ट्रू सेंस जो हम लोग के बड़े बूढ़े जो बना के धर्मशाला गए थे कि बहुत ही कम कॉस्ट में, जहाँ फ्री में भी है, बहुत सारी धर्मशाला फ्री भी है, तो हाँ यस सर डेफिनेटली। सो ये रिलीफ ऑफ द पुअर में भी धर्मशाला को आप काउंट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, अगेन आप धर्मशाला भी है, जैसे आप 5 स्टार धर्मशाला भी बनने लग गई, नाम धर्मशाला है किंतु वो है 5 स्टार, सब तरह का फैसिलिटी है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द केस फ्रेंड्स। सो ये जयपुरिया धर्मशाला हम लोग बनारस में बड़ा अच्छा है वहाँ का। सो एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। एंड ये जो फॉर्म भरने के टाइम कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि जैसे आप फॉर्म में लिखा हुआ है रिलीजियस का अलग खर्चा बताओ, एजुकेशन का अलग बताओ, मेडिकल का अलग बताओ, इसका अलग बताओ, अलग अलग हेड वाइज एक्सपेंस मांग रहा है। अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रिलीजियस में डालें। अब मान लीजिए कि गौशाला है, गौशाला को आप क्या बोलोगे, रिलीजियस है कि चैरिटी है, क्या है? हाँ रिलीजियस है, आप बोल रहे हो रिलीजियस है, ये बोल रहे चैरिटी है। अब कर लीजिए डिसाइड। हाँ तो अब रिलीजियस है कि चैरिटी है गौशाला के लिए? तो फ्रेंड्स खैर एक डिसीजन है गौशाला के लिए कि गौशाला में जो है ना, उसमें डिसीजन में ये है कि आपको गौशाला से रिलेटेड एक डिसीजन दे। हाँ हाँ बॉम्बे पिंजरापोल ट्रस्ट, बॉम्बे पिंजरापोल ट्रस्ट का डिसीजन है 59taxman.com 364। ट्रस्ट इंगेज्ड इन मेंटेनिंग गौशालास and tending services to other animals and birds to be considered as charitable। तो गौशाला जो है वो चैरिटेबल एक्टिविटी हो गया। तो हाँ वो पांचों में आ जाएगा। मगर अब देखिए कि आप जब क्लासीफाई कर रहे हैं तो आप है ना एकदम बोले एकदम सही सही करना है, एकदम टू द पॉइंट रिलीजियस है उसमें डाल दिए। तो अब क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है कि गौशाला जो है, अब गौशाला 2 गाय से भी हो सकती है, 2000 गाय से भी हो सकती है, और अभी तो नंदिनी और अमूल का झमेला चल रहा है अभी तो गुजरात और कर्नाटका का अमूल और नंदिनी का झमेला जो है चल रहा है कि कौन सा बेटर है। तो फ्रेंड्स गौशाला मैंने आज के दिन, और एक मैं कोई से सुना था कि गौशाला में भी जो है वो एक कोई पर्टिकुलर तरह का घी आता है, वो घी आप भाई साहब बना रहे 3000 रुपये किलो। हाँ हाँ 3000 रुपीज़ अ किलो, और वो घी का जो है माने वेटिंग लिस्ट है, वी आर पेइंग GST ऑल्सो। तो गौशाला देन हैज़ टू बी कंसिडर्ड इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स। हाँ सो फ्रेंड्स मैंने टाइम इज शॉर्ट, कितना सर कितना टाइम है मेरे को? छपड़िया जी आई हैव गॉट हाउ मच टाइम? सर सो फ्रेंड्स 2 डिसीजन जो मैंने आपको बताए, अर्बन अहमदाबाद अर्बन और न्यू नोबल, इसमें न्यू नोबल तो उतना हिट नहीं करेगा जनरल पब्लिक को, बिकॉज 1023C बहुत लोगों के पास नहीं है। मगर GPU वाला जो
अहमदाबाद अर्बन का केस विल हिट प्रैक्टिकली ईच एंड एवरी ट्रस्ट, ईच एंड एवरी ट्रस्ट शुड। और एक वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं हम लोग मुहावरा, एक तो बोलते हैं कि एक तो आग पे नीम जलाया क्या कुछ माँ बताती थी, हाँ नहीं वो तो खैर आपको पीना पड़ेगा, आप छात फूक फूक के पीना होगा, नीम चढ़ा। तो जब अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट न्यू नोबल के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया लास्ट पैरा में कि सिंस वी आर टेकिंग दिस व्यू which is departing from two earlier decisions of Supreme Court, this will apply only prospectively and not retrospectively. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो डिपार्टमेंट ने क्या है, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट को बड़े अच्छे से पढ़ा, उसमें बोला कि यहाँ पे माय लॉर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है कि ये फ्यूचर वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका माने क्या हुआ, वो मिसलेनियस एप्लीकेशन 2 दिन बाद फाइल कर दिया, मिसलेनियस एमए फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि प्लीज क्लैरिफाई वेदर इट विल अप्लाई इन फ्यूचर और, तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया पूरा एकदम हरा झंडी, बोला जिस साल का जो है वो अप्लाई होगा, जिस साल का जो मैटर है उस साल के लिए अप्लाई होगा। तो 148 जिंदाबाद। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सिस्टम में फ्लैग होता है इनसाइड पोर्टल में, और असेसिंग ऑफिसर प्रिंट करके 148 AB का नोटिस भेज देता है, यही तो हो रहा है। तो फ्रेंड्स माने जोकिंगली फ्रेंड्स, जो भी एनजीओ माने बना रखे हैं, जो मेंटेन नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, दोज हु वेर नॉट फॉलोइंग, बहुत सारी एनजीओज अभी ऐसी है, कलकत्ता में दुर्गा पूजा माने करती हैं, एक एनजीओ है, अच्छा बजट है, दुर्गा पूजा में देवी का 1-1 करोड़ रुपए का भी बजट है, लोगों का 1 करोड़ 2 करोड़ तक का बजट तो छोटी छोटी पूजा का आजकल होने लग गया, वो कलेक्शन करते हैं और वो दे आर फाइलिंग देयर रिटर्न ऑफ इनकम, बट उनको ये सब इतना झोल मोल सब मालूम नहीं है, हाँ। और चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट्स के पास जाएंगे, उनको खुद को मालूम होगा तब तो बताएंगे, पहले तो खुद समझ लें अपने। हाँ, मेरे को भी अभी मैं कई चीज़ें नई जो है सुरेश जी बता रहे थे तो मेरे को ज्ञात हुआ। तो फ्रेंड्स, ये एनजीओ को मैनेज करना आज के दिन बहुत बड़ा एक बात हो गया है, और टू द टॉप ऑफ इट आई एम रिमाइंडिंग फॉर प्रोफेशनल्स, नफरा बैठा है वहाँ, और सेक्शन 271J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ऑल ऑफ अस नो, इनकम टैक्स ऑफिसर को भी पावर है मेरे पर 10,000 पेनल्टी लगाने का। 271J फॉल्स रिपोर्ट, संजय दा बोल रहे थे ट्रू एंड करेक्ट, 271AD ट्रू एंड फेयर नहीं है, ट्रू एंड करेक्ट है। सो वेदर देयर इज अ वायलेशन और नो वायलेशन, हम लोग ये ट्रू एंड फेयर व्यू वाला में निकलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, यू आर माने यू हैव नॉट चेक्ड, यू आर अबेटिंग देम। और माने फ्रेंड्स, माने आई मस्ट नॉट से, बट अभी भी लोगों का माइंडसेट है यार तुम बनाओ ना, हम ठप्पा लगवा लेंगे है ऐसा। तो देयरफॉर फॉर प्रोफेशनल्स एंड ओवर एंड अबव प्रोफेशनल्स, जो ट्रस्टीज है जो मैनेज कर रहे हैं, उनकी भी लाइबिलिटी है, वो कोई छूट नहीं जा रहे हैं। ट्रस्टीज आर वाइकेरियस लाइबिलिटी है उनका। जीपीयू वाले का आपको सबसे पहले तो ऑडिट फीस बढ़वाइए, ऑनरी है तो बोले आप बोलिए कि मैं ऑडिट रिपोर्ट बना दूंगा, साइन आप किसी और से करवा लें, बिकॉज वर्चुअली इन अ स्मॉल ट्रस्ट तो ये सब ठीक है, किंतु अगर किसी बड़ी एनजीओ ट्रस्ट है जिसमें कि उनके पास ये फिगर्स ही नहीं है, और उसके अलावा कितने कितने रिक्वायरमेंट आ गए कि कैश पेमेंट होगा तो ही आपको, कॉर्पस से आप खर्चा नहीं कर सकते हो, लोन लेके नहीं कर सकते हो, 1-to-1 को रिलेशन। अरे आपको देखने के लिए तो पहले तो सब देखना होगा।
हाँ, तो सब्जेक्टिव तो आपको जो भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा कि वो कॉस्ट क्या है। अब आपको फिर वो माने जैसे अभी एक अमेंडमेंट आया ना कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट को इंगेज किया जाएगा। रमेश भैया 5 मिनट 5 मिनट। हाँ, सो फ्रेंड्स, दिस इज इन नटसेल these two decisions. There are other decisions also. अब मैं आपको जो लास्ट जो पॉइंट है रिलीजियस ट्रस्ट का, रिलीजियस ट्रस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली सेक्शन 215 में देखिए रिलीजियस वर्ड कहीं भी नहीं है। जो मैंने चैरिटेबल पर्पज का जो आपको बताया एग्जाम्पल, उसमें रिलीजियस वर्ड नहीं है। सो देयरफॉर 215 डज नॉट हिट रिलीजियस ट्रस्ट। हाँ, जहाँ पे रिलीजियस कम चैरिटेबल बोथ हैं, बहुत सारी ट्रस्ट है जो मिक्स्ड है, तो उस केस में इन सो फार एज रिलीजियस एक्टिविटीज आर कंसर्न दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल एज सच। व्हाई आई एम सेइंग एज सच बताता हूँ, बट चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए इट विल अप्लाई। जैसे कोई मंदिर है उसके क्या है, टेम्पल भी है, संग में स्कूल भी चला रहा है, बहुत सारी है, हॉस्पिटल भी चला रहा है, तो टेम्पल का एक्टिविटी जो है वो रिलीजियस हो गया, बट हॉस्पिटल या स्कूल जो है वो चैरिटेबल हो गया। सो देयरफॉर दिस जजमेंट विल अप्लाई ओनली टू द चैरिटेबल एक्टिविटी, नॉट टू द रिलीजियस एक्टिविटी। नाउ फ्रेंड्स, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक तो ये कौन सी एक्टिविटी रिलीजियस है कौन सी नहीं है, वेदर यू आर इन रिलीजन और वेदर यू आर इन चैरिटी, that itself is a very debatable issue, and the line of demarcation is very very thin. जैसे आप कोई प्रेयर हॉल बना के रखे हैं, प्रेयर हॉल में सर्वधर्म प्रेयर चल रहा है, कोई भी आके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन सब कोई आके जिसको जो है वो अपने भगवान को जो अपना उनका भगवान है उसको प्रणाम कर, जैसे एयरपोर्ट में होता है प्रेयर का एक तो बना हुआ रहता है इंक्लोजर, तो वेदर वो प्रेयर हॉल बना के अगर करता है वेदर दैट इज अ रिलीजियस, डिबेटेबल फ्रेंड्स। इस पे एक दो डिसीजन जो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है CIT उज्जैन वर्सेस दाऊदी बोहरा जमात, रिपोर्टेड इन 364 ITR पेज 31 सुप्रीम कोर्ट। दाऊदी बोहरा जमात का केस जो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज डेल्ट विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजियस एंड चैरिटी। रिलीजन एंड चैरिटी में क्या डिफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन सर्टेन पैरामीटर्स। एक तो ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दाऊदी बोहरा जमात 364 ITR पेज 31। उसके बाद एक जजमेंट जो है राजस्थान हाईकोर्ट का इंटरेस्टिंग जजमेंट है, उमेद चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिपोर्टेड इन 307 ITR पेज 226, जिसमें विष्णु भगवान के मंदिर को रिपेयर करने का जो है खर्चा था। तो एक क्वेश्चन उठा कि ये रिपेयर जो है रिलीजियस है कि चैरिटी है, विष्णु भगवान का मंदिर। तो इसमें राजस्थान हाई कोर्ट केम टू द रेस्क्यू ऑफ द SSC एंड सेड दैट द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजियस पर्पजेज एंड चैरिटेबल पर्पजेज इज वेरी थिन एंड नो watertight compartment between two activity can be established. The character of charitable trust is not lost if one particular expenditure is incurred for the repair and renovation of Lord Vishnu temple. उमेद चैरिटेबल ट्रस्ट में फ्रेंड्स ये डिसाइड हुआ था। देन गौशाला का मैंने आपको बताया। एक डिसीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिफोर आई सिट डाउन, हाँ एक डिसीजन मैं आपसे शेयर करता हूँ। पंडित रामचंद्र शुक्ला वर्सेस श्री महादेव जी, महावीर जी एंड हजरत अली। पंडित रामचंद्र शुक्ला वर्सेस श्री महादेव जी, महावीर जी एंड हजरत अली। साइटेशन है 1969 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 700, 1969 3 SCC पेज 700। ये जो डिसीजन है फ्रेंड्स, ये डिसीजन है एक पहलवान का, दंगल। ये पहलवान जो थे इन्होंने क्या किया, एक अखाड़ा बनाया, अखाड़ा बना के पहलवानों को पहलवानी सिखाने के लिए अखाड़ा बनाया, और अखाड़े के बाहर में क्या है, एक बड़ी सारी हनुमान जी की गदा वाली मूर्ति लगा दी।
एक तरफ, और दूसरी तरफ एक है ना मस्जिद बना दी और एक शंकर जी का टेम्पल बना दिया बाहर में। तो हाँ, जो कोई भी पहलवान मुस्लिम है तो वहाँ करेगा, ये हिंदू है तो यहाँ आएगा, उस एंगल से। आज भाई अपने हॉस्पिटल में जाते हैं तो नीचे में जो है रहती है ना, स्कूल में जाते हैं तो सरस्वती जी की प्रतिमा तो सभी स्कूल कॉलेज में रहती है। हाँ, सभी अपने बंगाली लोग तो घर घर में सरस्वती पूजा होती है। तो उसी तरह वो अखाड़ा में बाहर में ये लग गया। अब वो मुसलमान, ये सॉरी, वो पंडित जो रामचंद्र शुक्ला जो है, उसने ये ज़मीन जो है वो अपने माने दे दी अपने फैमिली को, किसी को भी उसने विल के हिसाब से दे दी। अब वो ज़मीन जो है विल के देने के बाद एक किसी के पास आई तो उसने बोला भैया ये ज़मीन मेरी है, इसको जो है मैं बेचना चाहा। तो उस पर झमेला खड़ा हो गया, बोला नहीं ये तो रिलीजियस ट्रस्ट है, ये जो ज़मीन उसने जो दी थी अखाड़ा को वो रिलीजन के लिए दी थी, क्योंकि दो बाहर में जो है खड़े तो इन दैट कंटेक्स्ट फ्रेंड्स द क्वेश्चन अरोज वेदर it was for the purpose, it was a the land which was given to akhada was for the purpose of creation of a trust or not, or it still remained his individual property which he was capable of giving by way of succession. In that context friends, the Supreme Court said no, किसी भी अखाड़ा में जो है वो हनुमान जी का मूर्ति होना स्वाभाविक है। पहलवान है तो उनको हनुमान जी का पहले बजरंग बली का पूजा करेगा तभी अंदर जाएगा, तभी तो वो कुश्ती कर पाएगा। इसलिए वन कैनॉट से कि ये जो दो ठो ये लगाने से ही ये रिलीजियस ट्रस्ट हो गया, ये रिलीजियस नहीं है, ये इंडिविजुअल उसी की प्रॉपर्टी है और जिसको भी दिया देने सकता है। इन दैट कंटेक्स्ट फ्रेंड्स, इन दिस डिसीजन religion and charity was distinguished, which I find to be an interesting one friends. That's it friends, thank you. एक मिनट पहले उनका था एक, हाँ क्या प्लीज AOP is running. If the entity which is running the school, if it is covered within 1023C3A, AOP ordinarily AOP का जो मतलब है, Supreme Court has said association of person means association of individuals who have come together for the purpose of business. AOP का definition वो है. Trust जो है generally it is treated as AOP. In that context I think आपका अगर activity education and medical है और अगर limit के अंदर है then you will be eligible for approval. हाँ ठीक है, आ जाएगा yes. Unless माने आप कोई बहुत ही profit making exercise कर रहे हो, in that case the facts may have to be seen. Profit क्या distribute कर रहे हो? CSR fund received by a trust, whether 10 BD will be filed or not? Again, in my opinion, 10 BD will not be filed because CSR funds, as I said, is specified donation है, which is refundable. So माने it is not 10 BD में वो देंगे तो वो आपका डोनेशन है तब आप देंगे. तो ये कंपनी डिमांड तो करेगी ना रिसिप्ट की? टेम्पोररी रिसीट, आप तो पैसा लिए हैं तो रसीद दीजिए, डोनेशन का रसीद क्यों देंगे? नहीं, जनरली क्या होता है वो लोग डिमांड करते हैं. हाँ, जनरली डिमांड करते हैं कि वो 10 BD दीजिए, 10 B दीजिए. वो आपको नहीं, तो अगेन कि अगर वो पैसा रिफंडेबल नहीं है तब आप 10 BD में दे के दीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, रिफंडेबल है कि नहीं है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, हाउ कैन वी से? बिकॉज एट द टाइम जब आपको फंड मिलता है तब वो उसमें क्या क्या कंडीशंस लगा हुआ है, फ्रॉम दैट यू कैन सी.
whether it will be corpus or whether it will be corpus fund or general fund. CSR कॉर्पस में देना तो अब अलाउ नहीं है ना. That is what I said. In my opinion, ट्रस्ट के केस में it all depends कि वो फंड्स का नेचर क्या है, whether it is refundable or not. It is not refundable, then you can take it as your income and treat. Society. सर स्पेसिफिक पर्पस के लिए विथ ड्यू रिस्पेक्ट कॉर्पस नहीं होना चाहिए. सपोज मैं दे रहा हूँ कि मैं कोई डोनेशन दे दिया, जैसे भाई साहब ने अभी एक एग्जांपल दिया था कि मैं 100 बच्चे का फीस आप पर्पस में यूज करो, तो वो स्पेसिफिक पर्पस है. बट ये कॉर्पस नहीं हुआ ना, मैं तो फीस का खर्चा उससे कर रहा हूँ. विच वन? अगर it is not refundable, then you have to show. There is no option. You don't have any option not to show. Sir, my course. नहीं, but if the obligation of the trust is not met, then वो पैसा ट्रस्ट को रिटर्न तो करना नहीं है. Then ultimately it is your income only. हाँ, you may have to account for. जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं, टेम्पल्स हैं, जहाँ पे मान लीजिए कि पैसा दिया जाता है विद ए स्पेसिफिक पर्पस कि इस पर्पस के लिए ये पैसा यूज कीजिएगा, गौशाला में यूज करना है आपको. नहीं, हाँ, तो वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है, मगर वो आपको रिफंड नहीं कर रहा है. इन दैट केस आई थिंक इट हैज टू बी अकाउंटेड एज इनकम. हाँ, 15% आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको नेसेसरली कंपल्सरी. एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड योर. सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं CSR ग्रांट में थोड़ा ऐड कर रहा हूँ. देखिए, CSR ग्रांट जो पाटोदिया जी बोल रहे हैं, लीगल कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो कोई भी यदि ऑब्लिगेशन के थ्रू ग्रांट आपको मिल रहा है कि आपको उसमें खर्चा करना है तो वापस करना है, तो वो आपकी इनकम नहीं हो सकती है. लेकिन ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना व्यू नहीं दिया है. तो अपने को, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सेक्टर से अपने को कंजर्वेटिव हिसाब से देखना पड़ेगा, तो आपको देखिए ITR फॉर्म क्या बोल रहा है. ITR फॉर्म CSR ग्रांट को इनकम मान रहा है. आपकी VC शेड्यूल में CSR ग्रांट का अलग से बोला हुआ है, ठीक है. ATG भी उसको वॉलंटरी कंडीशन मानकर बोल रहा है कि 2 फंड के छोड़ के सब में ATG मिलेगा आपको, ठीक है. वहाँ पर बोला कि आपको खर्चा उसी साल में करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हैं तो पैसा आपको रिफंड करना पड़ता है. और बोल के जितनी बड़ी एंटिटीज़ हैं ITC वगैरह, वो मार्च के पहले पैसा ले लेती हैं. यदि आपने उसमें 10 लाख दिया और आपने 9 लाख खर्चा किया तो 1 लाख वो वापस ले लेती हैं. तो बेसिकली टू द एक्सटेंट खर्चा हुआ और आपने पैसा वापस कर दिया मार्च के पहले, तो 9 लाख रुपये आपको CSR ग्रांट में ITR में लिखना पड़ेगा. यदि आप कंजर्वेटिव वे से जा रहे हैं कि इनकम वहाँ नहीं दिखाएंगे तो आपका VC शेड्यूल मिलेगा नहीं ITR 7 से, फिर आपको क्वेश्चन आएंगे. तो यदि आप ये इनकम नहीं होनी चाहिए, जो पाटोदिया की बात से मैं सहमत कर रहा हूँ, लेकिन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क जो है ना ITR 7 का, BD का, उसको सजेस्ट नहीं कर रहा है कि आप रिस्क ले. उस सेक्टर के लिए जो रिस्क आपको, वो सेक्टर आपको सपोर्ट नहीं करेगा. बाद में आप ग्रांट दिखा के खर्चा क्लेम कर लेंगे, बात खत्म, आपको कोई टैक्स नहीं लगना है. आप ग्रांट को नहीं भी दिखाएंगे तो भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, और दिखा के खर्चा क्लेम करेंगे तो भी आपको टैक्स नहीं लगना है. नहीं, वो डिसलाउ हो सकता है, लेकिन उसमें अभी डिपार्टमेंट अपने फॉर्म के हिसाब से गया नहीं है. और फिर 224(16) जो सब सेक्शन आए हैं, उसमें मोटा मोटी ग्रांट को भी इनकम मान रहा है वो लोग, जो 1416 से चेंज किया है उसमें, तो उसमें उसको भी इनकम मान रहा है. तो मेरे ख्याल से इसमें है, हमेशा ये डिबेट रहेगा कि स्पेसिफिक ग्रांट आपका इनकम है कि नहीं है. लेकिन यदि अपने ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को देखते हुए उसको इनकम मान कर वो ले लीजिए 15%. दोनों चीज़. सर लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी है, जिस टाइम हम रजिस्ट्रेशन लिए थे, जो मेंबर थे, बाद में नेक्स्ट ईयर मेंबर चेंज हो गए, फिर डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि नहीं सर?
हर साल मेंबर चेंजेस होते हैं। मेंबर चेंज के लिए कोई इंटीमेशन का दरकार नहीं है। जो माने पोस्ट होल्डर हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स का चेंज जो होता है उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। जैसे हर साल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चेंज होते हैं, वही वो आपको रिटर्न में लिखना पड़ता है, दैट्स ऑल। नहीं तो रजिस्ट्रेशन नया नहीं पड़ेगा ना। इसमें जो कन्फ्यूजन हो रहा है ना, वो क्या हुआ कि पहले जो सर्टिफिकेट मिली आपको 5 साल वाली जो कन्वर्ट हुआ था ना, तो उसमें उन्होंने बहुत से कंडीशंस लगा दी थी। उसमें वन ऑफ द कंडीशन जो वो बोल रहे हैं वो भी लिखा हुआ है कि कोई भी यदि बोर्ड में चेंज होगा तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, लेकिन वो रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो मैंने अपने उसमें कवर भी किया था कि वो जून या जुलाई 2022 को या 21 को डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर दिया कि हमारी जो भी कंडीशंस वहाँ बोली हुई है उसको नल एंड वॉइड माना जाए, उसको उन्होंने हटा दिया है। तो आप जो बोल रहे हैं उस कंडीशंस वहाँ लिखी हुई है आपके रेसिडेंस सर्टिफिकेट में, उसको देख क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो कंडीशंस अभी वैलिड नहीं है, डिपार्टमेंट के सर्कुलर से वो हट गई हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, अदर्स इनकम में जो डालना था हम लोगों को वायलेशन ऑफ लॉ के कारण से डाल रहे थे अमाउंट, तो जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वगैरह है उसको कहाँ पे डालेंगे? एआई शेड्यूल में डालेंगे। एआई शेड्यूल है, एआई शेड्यूल है आईटीआर का। ओके, एआई शेड्यूल में सारी इनकम आती है ट्रस्ट प्रॉपर्टी की। ठीक है, थैंक यू। Thank you, friends. I'm fortunate enough to give both of chance to learned speaker here. We started with Suresh Kejriwal ji, who started with the registration of the trust and what are the implications and what are the new rules. He has given complete details for that one. Thereafter, we came to filing of the ITR, and it was very well. Although we could not understood anything how to file the ITR, but it was clearly mentioned by Sanjay ji how should we go ahead with the idea. And thereafter thereafter Padudia ji, Ramesh ji, he explained very clearly the judgments which were there, and particularly for the Ahmedabad for the GPU. So we are very much delighted to have all the 3 speakers on one stage, and we are also very much delighted for the good audience who is here since 1 p.m. onwards. So with these remarks, I say thank you to each and everyone. Thanks. And we request delegates to kindly come forward for the I'll ask Cheria ji to provide memento to Padudia ji. Please. I'll ask please give memento to Kaparia ji. Chairman sir.